Dear students, greetings of the day. Welcome to this session. Let us start with transformers. Kindly let me know first whether I am audible or not properly. So let us start this session with EMF equation of the transformer. There are many conclusions what we have discussed in the class from the EMF equation of a transformer. In that, the most important conclusion is V by F ratio must be kept constant. This is the EMF equation of the primary winding. Let us imagine some constants. This is a number which is universal constant. Let the primary turns be a constant. Let the core cross-sectional area is a constant. From this, what we can say is, when it comes to E1, we can write V1 minus I1 Z1 is equal to E1. Simple KVL of the primary. Neglecting the voltage drop, which is really a small value in a transformer, we can almost say V1, E1 are proportional to each other, almost equal. So, if V1 is the supply voltage or the source voltage, because primary winding basic definition is the winding which is connected to source supply. So, you can say E1 is proportional to supply voltage V or V1. So, we can say now from this, the flux density in the core is proportional to V1 by F or V by F. As you know, the transformer core is designed to operate with a particular flux density. Once the transformer is designed to operate for a particular flux density, when we are using it, we should not vary the flux density in the core. Means, we have to maintain V by F ratio constant. For example, if F decrease by putting V constant, flux density increase in the core. If flux density increase in the core goes into deep saturation. We don't want core to go into saturation. We want to operate it at a knee zone only. Because we have discussed many things in the class. As you know, we should not saturate the core. For that, V by F ratio must be maintained constant. From this, we can write one relationship. V1 by F1 is equal to V2 by F2. Let us say V is supply voltage. In the first case, the frequency of the primary in the first case. This is not primary secondary concept. Don't misunderstand seeing 1 and 2 primary secondary. It's not like that. In the first case, V by F ratio. In the second case, V by F ratio. They should be maintained same. From the same relationship, we can write one more equation like this. As you know, transformer rating is in kVA.
Volt amperes play a vital role in deciding the rating or capacity of a transformer. So, in kVA, there is V. As the voltage rating goes up, as the voltage rating increases, obviously kVA rating or capacity of transformer also increases. Larger the voltage rating, larger its kVA rating, that's a natural thing. So, we can say kVA rating is proportional to voltage rating of the transformer. On that basis, we can write kVA1 by F1 is equal to kVA2 by F2. This is also two cases, first case, second case. How to apply these equations in the questions, let us see. A 200 by 100 volt 50 Hz transformer is to be excited at 40 Hz from the 100 volt side. This is a transformer (200 by 100 volt), 50 Hz basically. It is to be excited not on 200 volt side. It is to be excited on 100 volt side at 40 Hz. Originally 100 volts, 50 Hz. In the first case, V by F ratio is 2. V by F ratio is 2 in the first case. In the second case, also it must be maintained 2 only. We should not vary. So, V1 is 100. First case. F1 is 50. Now, it is to be operated at 40 Hz. F2 is 40. Then what is to be V2? For example, if you don't follow this equation, if you operate the same transformer with 100 volts by applying 40 Hz, what happens is, as F reduced by keeping V constant, core goes into deep saturation. As it is not allowed, we have to proportionally reduce the voltage also, keeping V by F ratio constant. So, as F became 40, in order to maintain V by F ratio constant, V2 should be 80. So, if you apply this formula, V1 by F1 is equal to V2 by F2. So, as you know V1, as you know F1 as well as F2, by substituting we can find out V2. For this set of questions, this equation will be helpful to you. In this question, it is operated through secondary side. Sometimes it can be given on secondary side, sometimes it can be given on primary side. Any side, same concept. For example, if it is given, if it is operated on primary side, on 200 volt side, same story. 200 is V1, F1 is 50, F2 is 40, what is V2? Like that you can calculate. Similar to V1 by F1 is equal to V2 by F2 formula, in that equation, we have one more equation, that is kVA1 by F1 is equal to kVA2 by F2.
This equation you can apply to this set of questions. I am reading the question. A 4 kVA 230 by 115 volt 400 Hz transformer originally designed for the use in aircrafts is available in a laboratory for obtaining 115 volts from standard 230 volt 50 Hz mains. If overloading of the device is not permitted, then the net kVA output of the transformer in the laboratory cannot exceed. This is the question. What is mentioned here is overloading of the device is not permitted. From this equation, what we can conclude is kVA rating of the transformer is directly proportional to frequency. We can say like that. It is directly proportional to V, V is proportional to F, and obviously we can say kVA proportional to F. So as the frequency of the operation is increasing, kVA rating also increases. As the frequency of the operation is decreasing, for the same transformer I am talking, the kVA rating also decreases. For example, first kVA 1 is 4 kVA given in the question. F1 is 400. This is not a power transformer, this is a special transformer designed for operating in those kind of aircrafts like that, not a power or distribution transformer or the transformer used in power system applications. Imagine if you have such a transformer designed for 400 Hz. Now they want to use the same transformer in a laboratory for a power system frequency. What is the frequency? 50 Hz. Means F2 is 50 Hz. Then what is kVA 2? What happens to its kVA rating? Let us check with that equation. kVA proportional to F or kVA proportional to V, same concept. From this, kVA 1 So this is the kVA 2. How to understand means when the same device this transformer 4 kVA for 400 Hz. This device is previously designed for 400 Hz operating for 4 kVA. That was the transformer. Capacity is 4 kVA. Same transformer is now used not for 400 Hz. It is used for 50 Hz only. Then you cannot keep 4 kVA load on the same device. If you keep 4 kVA load on the same device, it gets overloaded. Why? Because its capacity is reduced to 0.5 kVA only. Because frequency of operation reduced, automatically kVA capacity also reduces. So if you keep 4 kVA load on the same transformer at 50 Hz, it will get overloaded like anything because its actual capacity is now only half kVA. So as overloading of the device is not permitted, now its rating is only 0.5 kVA. That way these equations will help you. These are the two important conclusions. Many conclusions are there. These are the two very helpful conclusions from the EMF equation.
Overloading is never permitted in any machine. Overloading is never permitted. In contingency cases, you can overload up to a small percentage, 10, 15 or 20 or 25 like that generally. That's a emergency contingency cases. But in general, if you want your machine to have a good life and good performance, good aging, good age, better don't overload, because the machines are designed to give good efficiency only near rated load conditions, not on overload condition. Overloading means obviously you are losing life of your machine. So next, one more concept is, B proportional to V by F ratio. When you see some questions like this, if the voltage applied to a transformer primary is increased by keeping V by F ratio fixed, or sometimes a transformer is designed for the operation on 60 Hz with some voltage and it became 60, became 50, like that, you will see some questions. You will be asked what happens to eddy current loss, what happens to hysteresis loss, or what happens to iron losses. Like that, we will be asked some questions. So to deal those questions, first let us say flux density constant case means V by F ratio is maintained constant. After reading a question, you will clearly understand whether V by F ratio is maintained constant in the question or not constant. If you think V by F ratio is maintained constant, immediately go to these two equations like this. Eddy current losses are proportional to B square F square. Hysteresis loss proportional to B power 1.6 into F, flux density frequency. If flux density is maintained constant, then eddy current loss proportional to F square, hysteresis loss proportional to F, that's it. After reading the question, if you feel V by F ratio is not maintained constant, immediately go to these relationships. Like in place of B, put V by F, because B proportional to V by F. If you put here V by F, what you will get is finally V by F square into F square, you will get only V square. P proportional to V square. Next, pH proportional to V by F power 1.6 into F. What you will get is V power 1.6 into F power minus 0.6. F is in the denominator. Let us see this question first. If the voltage applied to a transformer primary is increased by keeping V by F ratio fixed. Very clearly, this question contains V by F ratio fixed. Means PE proportional to F square, pH proportional to F. Clear. Next. If V is increasing, then what happens to magnetizing current and core losses? Magnetizing current requirement depends on the core saturation. If core goes into deep saturation, one of the major drawbacks is more magnetizing current is required by the primary to be drawn to maintain the flux. More effort is required in saturation mode. So more magnetizing current it will take. In order not to make more magnetizing current drawn by the transformer, which is nothing but reactive power only, V into Im is Q only, we don't saturate it. That's one of the major reasons. So now let us check in this case what happens to magnetizing current. It will be remaining same.
Why it will remain same means V by F ratio is fixed. If V by F ratio is fixed, automatically B will be constant. If B max is constant, the core is operating for the same flux density for what it is designed already. So no issues with the saturation. Therefore, magnetizing current remains constant. It won't change. When it will increase? If only frequency decreased by keeping V constant, definitely B will increase because B proportional to V by F. If F decreased, B increased. When B increased, core goes into deep saturation. Then transformer primary will definitely ask more magnetizing current. Or if you increase frequency by keeping voltage constant, then B decrease, then IM will decrease, vice versa. But in this question, as V by F ratio is maintained constant, magnetizing current remain the same for sure. Now let us say core losses increase or not. Very clear, PA proportional to F square, PH proportional to F. In this question what is mentioned? Voltage applied to a transformer primary is increased. V increased means F also must increase in order to maintain V by F ratio constant, right? When you are increasing V as per the question, you have to increase F also in order to maintain V by F ratio constant. If V is doubled, F also must be doubled, like that. So if F increase, PE will increase as well as PH also will increase, both will increase. So iron losses also increase. Core loss will increase, but magnetizing current remains constant, remains the same. D is the answer. Next question. A transformer is designed for the operation on 60 Hz supply, is worked on 50 Hz supply system without changing its voltage and current ratings. This is a question where B max is not constant. B proportional to V by F. Now, it is mentioned clearly voltage is constant. But what is increasing? It is first belonged to 60 Hz. Now it is operating on 50 Hz, which means F reduced. So B increased. B max not constant case this belongs to, right? Now, what we have to see now is, if you compare with the efficiency on 60, what will be the efficiency at 50 Hz now? Efficiency is linked with losses, as you know. Let us check what happens to iron losses first. Of course, B max not constant. It is not maintained constant because of this operation. Transformer is designed already for a particular flux density for a given voltage rating and a frequency. Imagine some 0.8 Tesla or 1 Tesla or 1.2 Tesla. Whatever you do
with your transformer, do, but flux density in the core must be maintained as per the prescribed standard as it is, which means V can change, F can change as per the standard, that is V by F ratio must be kept constant. Then in this question it is very clearly given V is constant but F is decreasing. So flux density increased, obviously magnetizing current requirement will be more, no doubt in that. But this question is mainly linked with what? Efficiency. What happens to the efficiency at 60 Hertz? So let us deal now, means compare the efficiency compared to 60 Hertz, 50 Hertz, what happened? Whether the efficiency decreased or increased. First let us check iron losses. So frequency decreased. Question belong to flux density is not maintained constant case. Then PE proportional to V square, means here which is unchanged? V is kept constant, right? In this question V is kept constant, frequency is reduced. So eddy current losses are unchanged in this particular case only, not everywhere, only here eddy current losses remain unchanged, but Hissar's loss will increase because frequency is reducing from 60 to 50, F is in the denominator, so Hissar's loss will increase. If Hissar's loss increase, definitely one component in iron loss increased means iron loss increased, then efficiency will decrease marginally for sure. Meaning of marginally means slightly. Simple words, slightly. Efficiency don't fall. Slightly it will reduce because iron losses are increasing. You know, transformer efficiency is more than 99%. If you keep, imagine in the efficiency, next we'll solve, in the efficiency if you keep 500 watts as iron loss, next if you keep some small value like 490 or 480 or 450 like that, efficiency increment is not very high. In the same way, from 500 if you go to 550 or something, efficiency decrement is also not very low, like marginally it's very. If you see in the class notes, efficiency curve of a transformer, it won't be like this, it will be like this. Marginal changes will be there, means slight changes will be there. Because its efficiency is very, very high, losses are very, very small. In that small amount, there is a small change. In this question, you cannot calculate exactly. If you want exact calculation, next questions are there. It depends on the data. It totally depends on the particular data and context of the question, how much change you got. We'll see the next question, you'll understand. In the previous question, it is given transformer is designed to operate at 60 Hertz for a given V, for a given F. It is operated for 60 Hertz. This is original case. Second case, it is worked on 50 Hertz supply without changing its voltage. First question, 100 volts 50 Hertz became 80 volts at 40 Hertz. If you don't change to 80 volts, what happens? If you want to understand, this is the best question. Go back to the first question. 100 volts 50 Hertz is the transformer secondary side, right? If you want to operate at 40 Hertz, what should be the voltage?
You have calculated and you have said 80 volts should be the voltage. Why? V by F ratio must be maintained constant to maintain flux density constant, right? In this question, what is given is V is kept like that only, but F reduced from 60 to 50 directly. See the question. So, V is kept same, but F reduced from 60 to 50. Then what happens? Flux density in the core will increase. Then a rated value, a nominal value, if flux density increases, definitely the transformer will draw more magnetizing current to maintain the flux because it is going under saturation. Go back to class theory, you will understand. Now what I want to convey is finally it will ask more magnetizing current. That is one effect. More current is asked is one effect. Second effect is mainly the iron losses in the core will definitely change. How they change, how much they change. If you want to understand, go back to the equations. This. Because the question belongs to flux density is not maintained constant, what happens to eddy current loss? Eddy current loss remains unchanged. Why? PE proportional to only V square. Only V square. Don't think eddy current loss is independent of frequency. It is never independent of frequency. See, PE proportional to F square. Only in this particular case, in this specific case only, eddy current losses are independent of frequency. No, not other cases. Afterwards, okay, eddy current loss is not changed in the question. Then what is changed? Let us check. Hysteresis loss. Is that changed or not? Yes, V by F. F is in the denominator. So if F is reduced, hysteresis loss will increase. If hysteresis loss increase, automatically efficiency will decrease. If losses are increasing, efficiency will decrease. But in a transformer, losses are very, very small values. You know that logic already. That's the reason why efficiencies are more than 99%. So, if iron loss one component is increasing by small value, you don't feel that efficiency will fall. Efficiency will decrease for sure. So, increase, remain unaltered in all these options. Decrease marginally is the best answer. Next question. The total core loss of a transformer at rated voltage and frequency 450 Hz is 2400 watts. Let us say PI1. Iron losses in the first case is 2400 watts. If voltage and frequency are reduced to 200 volt 25 Hz, means what happened to V by F ratio? Check first. V1 400, F1 50, V2 200, F2 25. V by F ratio is constant. Then pH proportional to F, PE proportional to F square, right? Here you are not given individually what is eddy current loss, what is hysteresis loss. In some questions individually they will give you. Then you can directly put pH2 by pH1 is equal to F2 by F1 direct. No need of assuming any constants. In the same way, sometimes in the question they will give you individually what is eddy current loss. Initially eddy current loss is this much. What is eddy current loss? When the voltage and frequency are doubled or reduced like that. Then you can use PE2 by PE1 is equal to F2 by F1 square. Directly you will get the answer. Sometimes
they will give you whole iron loss value like this. When V and F are 450, this is the value. If V and F are reduced in a proportional way, this is the value, 800 watts. Pi2 is 800 watts. So what we can do now is pH is equal to some constant A. A into F. If you find A, we can easily calculate what is pH. Similarly, PE is equal to constant B F square. So first, Pi1 is equal to A F1 square plus B in the first case. In the second case, for example, is equal to A into 50 plus B into 50 square is equal to 2400. Similarly, A into 25, because frequency reduced to 25 Hertz, plus B into 25 square is equal to 800. A is a constant to find out hysteresis loss. B is a constant to find out eddy current loss. Two unknowns, two equations. If you solve, easily you will get A value, B value. By solving, you will get A value, B value. Once you know A value, B value, pH is A into F, PE is B into F square. So for what frequency you have to calculate, you can calculate by substituting. So can anyone type what is A value, what is B value?
Check once. A value is 16, B value 0.64. Thank you for your replies. Once check. Someone are giving A value, B value like opposite values. Kindly check. So once you know A value, B value, by substituting here, you can find out eddy current hysteresis loss for any frequency. It is asked for 50 Hz. So hysteresis loss is 16 into 50. That is 800 watts. PE is 0.64 into 50 Hz. Thank you for your replies. We'll go to the next question. "220-volt 60 Hz transformer has hysteresis loss of 340 watts and eddy current loss of 120 watts. If the transformer is operated from 230-volt 50 Hz, supply means find its new core loss." After reading the question, first step is check. Is V by F ratio maintained constant or not? In this type of questions, first step is that. If V by F is maintained constant, follow the previous question pattern. If V by F is not constant, change the equations. V1 is 220. F1 is 60. V2 is 230. F2 is 50. Check V by F ratio in the first case, V by F ratio in the second case. It won't be same. Check. If it is not same, you know what to do. PE proportional to V square. PH proportional to V power 1.6, F power minus 0.6. Right? So now you can directly use this PE proportional to V square in this. PE2 by PE1 is equal to V2 by V1 square. Directly you can take like that. No need of any constants if you know individually, because in this question it is clearly given eddy current loss is 120 watts. Hysteresis loss 340, eddy current loss 120. PE1 is 120. So PE2 is 120 into, what is V2 value? 230. V1 value 220.
Next, hysteresis loss. Directly you can say pH2 by pH1 is equal to V2 by V1 square power 1.6. V2 230 by 220 power 1.6 into F2 by F1 power minus 0.6. F2 is 50, F1 is 60 power and you know pH1 value is so by substituting pH1 value 340 watts into 340 watts will get pH2 as 407. So the total loss will be around 538. So hope you understood how to deal the iron loss questions which are common in the exams. Now let us move on to another question. You will be generally given efficiency at two cases. For example, a 300 kVA transformer has 96% efficiency at full load as well as half load. At some point at power factor lagging. Find iron loss, copper loss. Find maximum efficiency at point at power factor lagging as well as maximum efficiency. In this question I want to give you, you will get a concept like you will get two questions. One is find maximum efficiency or maximum efficiency at a given power factor. What is the difference? You all know maximum efficiency happens only for a particular load. Only for a particular load, in the sense a fraction of load which is X, that is root iron loss by full load copper loss. That is one thing. Second thing is maximum efficiency happens only for unity power factor. At the same time, for every power factor it will have its own maximum. Maximum of maximums happens at unity power factor, or maximum possible efficiency is only at unity power factor. If you are given a question, find maximum efficiency, it means by default you have to take unity power factor into consideration. Sometimes you may not be asked for unity power factor max efficiency, you will be asked like this also, maximum efficiency for a given power factor also. Then in place of unity power factor you have to keep the given power factor, but X remains the same. Let us deal this question so that we will get both the concepts. First, 300 kVA transformer. 300 kVA is the rating of the given transformer.
96% efficiency at full load as well as half full load. So let us do like this. Efficiency fraction of load into VA rating into operating power factor by same fraction of load. N is fraction of load. Full load means N is 1, half load means N is 0.5, like that, into VA rating into power factor plus iron loss plus N square PCU. PCU is full load copper loss. PC is what? Full load copper loss. Copper loss at full load or rated load. N is fraction of load. If the machine operates at full load or rated load, N is 1. So first it is given 96% efficiency at full load. Full load means N is 1. Volt ampere rating is given 300 kVA. Efficiency is given 0.96. So I am writing like this: 0.96 is equal to N is 1, 300 kVA, power factor 0.8 by 300 into 0.8 plus Pi plus PCU 1 square. This is the first equation. Second equation, at half full load also same efficiency. Here half full load 0.5 square into 300 0.8 plus Pi plus PCU by 4, 1 by 2 square, 1 by 2 square into PCU, PCU by 4. Now you have two equations, two unknowns, Pi, PCU. Two equations, two unknowns. Easily you can solve. What is Pi, what is PCU?
This is equation 1. This is equation 2. By solving these two equations, we get PI value, PCU value. Vedant Srivastava, your doubt will be clarified in the next concept only. When I solve maximum efficiency, your doubt will be clarified. Wait. N doesn't have any square in the numerator. Anita Chowdhury. N has no square in the numerator. N is fraction of the load. For example, this is capacity rating of the transformer. If transformer is operating at full rated load, rated load, all are same, then N is 1. 1 into 300 kVA, because 300 kVA is operating on 300 kVA basis. Like 1 liter water bottle contains 1 liter water, that's it. Now, if 1 liter water bottle contains only half liter water, then what is the actual capacity into 0.5, like that, no square. Square will come before copper losses, because copper losses depends on square of the current, I square R. I'm sorry. Here it's a mistake, no square. No square, I'm sorry. It should be 1 by 2 only. N into. In the copper losses, square will come. 1 by 2 square will come. That's fine. Thank you for correcting. That's okay. Thank you. So if you don't keep square, then only you will get those answers. Next. How to find out maximum efficiency? Maximum efficiency at 0.8 power factor lagging. Maximum efficiency, in place of N you have to keep X. In place of N you have to keep X. Why? Because maximum efficiency only happens at a particular loading. That fraction of load is that only. In theory you know this logic, right? So you have to keep X here. Same volt ampere rating. What power factor they asked? 0.8 power factor. Keep 0.8 power factor here. Okay. Next. Here also X, volt ampere rating. Given power factor you keep. Here PI as it is. Here we have to keep X.
In place of n, we have to keep x square PCU. Remember, someone asked Vedant previously how we write Pi plus Pi. This is exactly the concept. According to maximum efficiency concept, condition for maximum efficiency happens when the variable loss is exactly equal to constant loss. For that, we get a condition like this: x square PCU should be exactly equal to Pi. That is condition for maximum efficiency. In theory, you will understand it. For all loads, copper loss will never be equal to iron loss. Impossible. Iron loss is a particular number, is one number which is constant. Copper loss keeps on changing. On half load, copper loss is different. At full load, copper loss is different. At 3/4 load, copper loss is different, as you see, that square factor. So copper loss keeps on changing. So for only a particular load, the copper loss of the transformer equals its iron loss. What is that load is X. So x square PCU is obviously automatically equal to Pi. Even if you calculate, you will notice that same logic you will get. If you keep x square into full load copper loss value, it will be exactly equal to iron loss value only. That's why in maximum efficiency calculations, no need to keep x square PCU. Directly you can keep Pi plus Pi, nothing but 2Pi directly. You will get easily answer. So maximum efficiency is x into 0.707 into 300 into 0.8 by 0.707 into 300 into 0.8 plus, you can keep Pi plus x square PCU, in the sense Pi is what, 3.333 plus what is x value, 0.707 square into what is full load copper loss, 6.666. you can keep. Without missing the decimals, if you keep exactly x square PCU is equal to Pi only. So not required all that. Directly you can keep 2 Pi. This is obviously equal to Pi only, that's why 2 Pi. So 2 into 3.333 into 100. This is maximum efficiency calculation for 0.8 power factor lagging. Now in this maximum efficiency calculation, one more thing is there. You will be asked simply maximum efficiency. If you are asked simply maximum efficiency, its meaning is maximum possible efficiency. Maximum possible efficiency comes only at unity power factor. Of course, you have to remember three things when you are calculating maximum efficiency. What are the three things? Number one, maximum efficiency happens only at a particular load which makes its full load, its copper loss is equal to iron loss. Only that load. So in maximum efficiency questions, first you have to find out X. What is the difference between N and X?
Someone asked just now. Kumari, what is the difference between n and x? I am repeating. N is fraction of load. It may be any load. You have a transformer of 300 kVA. 300 kVA is the capacity, like 1 liter water bottle. If you have a 1 liter water bottle with you, you can keep 1 liter water, you can keep half liter, you can keep 100 ml, you can keep 900 ml, any number you can keep, right? In a similar way, if you have 300 kVA transformer, you can operate for 300 kVA output, you can operate for 150 kVA output, 200 kVA output, any number, even zero output also. Means then, if you are operating at no load, zero output, N is 0. If you are operating at full load, N is 1. Means 100%. Per unit value, it is basically per unit value only. Fraction is basically per unit value only. So N is any number, it can be greater than 1 also. You can't use your water bottle in overloaded way. You can't put 100 ml extra, it will overflow. But on a transformer, on contingency cases, you can operate at some overloading case also. Sometimes in the questions you will get confused if I don't say like that. That's why I'm telling that only. Sometimes transformers get overloaded also. In all day efficiency questions you will see N factor somewhat more than 1 also. That's why I'm telling now only. It's an emergency. Don't think we operate a transformer for overloading case. Sometimes in the questions you may face this concept also, where N value of 5 kVA transformer might sometimes operate at 6 kVA or 6.5 kVA. Means definitely it is overloaded for a time being, no doubt in that. Sometimes N might be more than 1 also, that is overloading case, which is practically we avoid that. Don't think we use for it. No. We avoid that because we are losing efficiency. We are losing efficiency means we are losing the life of a transformer. We don't want to do that. We are here not to overload any transformer here. Now what I want to convey is N is that. N means a value between 0 to 1, sometimes slightly more than 1 also. Any number, but X is not like that. X is one particular number, means fraction, where if you find copper loss for that loading, it will be exactly equal to its iron loss. That is that particular load where transformer gives maximum efficiency. Hope you understood. N means any number. X means one particular number in those numbers where transformer operates at maximum efficiency. You have no guarantee that the transformer operates at full load means the full load copper loss equal to iron loss. If it is operated at half load means that half load copper loss equal to iron loss. No guarantee. So it depends on the design. So definitely transformer is designed for a particular loading. Normally power transformers give maximum efficiency near rated loading conditions. Distribution transformers give around 60% or 65% because of its operating or service conditions. These things you will see in all theories. What I want to convey is, if you get a doubt what is N, what is X here, N is any number between 0 to 1 or slightly more than 1 also. It is loading. Transformer can operate at any load on a given amount of time, from morning till evening, according to time of day. Different loadings will come. But X is not like that. X is one particular value in those where the transformer gives its maximum efficiency. If you want to find out X, this is the way. Iron loss by full load copper loss. N is not like that. N is any loading condition. Next, maximum efficiency, two types are there. One is maximum efficiency for a given power factor. You will ask like this. Find maximum efficiency for a particular power factor. Then you have to use that formula, that power factor only in the formula. But sometimes you will be directly given maximum efficiency. That's it. Nothing will be given. Then everything will be same with one change. In place of 0.8 you have to keep 1. Why you have to keep 1 means
maximum efficiency happens only for unity power factor. What is that max efficiency means? Maximum of maximums. If you are asked for a given power factor, use that. If you are not asked for a given power factor, it happens only for unity. Logic is simple. In the output by output plus losses format, when your output will be maximum at unity power factor only. Your output is not maximum at 0.8. If you keep here 1 means your output is maximum at unity power factor. That's why maximum of maximums. If you still didn't understand, I'll give you a small graphical point of view, then you can correct to theory what we discussed in the class. Generally, this will be the efficiency graph. Percentage efficiency, this is load. Fraction of load. Let us say load, fraction of load. According to the question what we are solving, maximum efficiency occurs at 0.707 fraction of load, right? Means 70.7% of load you are getting max efficiency. This is full load. Means 1. Full load means 1. This is 70% loading. Max efficiency is happening there. So obviously this is half load. 0.5. Okay, this is 0.25. Okay, like many values will be there like this. If I write 0.1, 0.2, 0.25, 0.5, 0.7, 1, these all are n. But remember, x is only one value. X is only one value. What is x means? I'll show you. This is iron loss. This dotted line is what? Iron loss, which is constant for any load. Constant for any load. Now, if you take copper loss into consideration, on no load, copper losses are negligible. On no load, I2 is 0, I1 is very small value, around 2%, 3%, 4% like that. You know R1 is very, very small value, I1 is 2% means 0.02, 0.02 square means 0.0004 into R1 is very small value. So you can ignore the copper losses at no load. As the load is increasing, copper losses will increase as square of the current, square of the load. So like a parabolic shape. Now observe carefully, this is iron loss. What is this iron loss? 3.333.
What's this value? 3.333 kilowatt. Now, copper losses at no load are negligible. Copper losses at no load are negligible. Now, as the load is increasing, copper loss also increase. They will exactly equal to iron loss only at a fraction of load called X. Means it goes like this. As a parabolic shape, copper losses will increase like that. So, exactly here, the copper losses of the transformer equals the iron loss. Then, maximum efficiency. That loading factor is X. N means any. X is only one value. Now, imagine this is the transformer operating for unity power factor. Unity power factor load. If you operate the same transformer for 0.8 power factor load, remember the efficiency curve won't be the same. It will be somewhat lesser. Reason is not because of losses. Losses are independent of power factor, as you saw in the theory. In its kVA operated conditions, in the up to rated kVA, definitely losses are independent of operating power factor. But what is affecting the efficiency means, if you operate at 0.8 power factor, output is reduced. If you keep here 1, efficiency will be more. Here if you keep 1, efficiency will be more. Why efficiency will be more means not losses are less, output is more. If you keep here 0.9, efficiency will be lesser compared to 1. If you keep here 0.8, efficiency will be lesser compared to 0.9. If you keep 0.7, 0.6, 0.5, 0.5, efficiency is lesser, not losses are increasing, losses are same. So, every output correspondingly reduces because of power factor operation. So, if this is the efficiency curve for unity power factor, for 0.8 power factor you can imagine like this. This is for 0.8 power factor. For 0.6 power factor, .8, 0.6. So, here you can notice two things. One is maximum possible efficiency, means this point, happens only for unity power factor, but at the same time every power factor has its own maximum. For 0.8 power factor lagging load, this is the maximum efficiency. For 0.6 power factor lagging load, this is the maximum efficiency, happens only at X. So, there are two concepts now. There is maximum efficiency for every particular power factor, and there is maximum of maximums, that is simply maximum efficiency or maximum possible efficiency, that happens only for unity power factor. So, if you are asked maximum efficiency, keep 1. X is common, compulsory. Three things I told you already. I told you when you are solving maximum efficiency question, 3 things you have to remember. Number 1, maximum efficiency happens only for X. Number 2, it happens only for unity power factor. Number 3, in place of losses, keep 2 pi, enough. In place of losses, keep only 2 into pi. Simply you will get the correct answer. No chance of error. But here you have to understand one more thing also. Sometimes you will be asked, find out maximum efficiency for a given power factor. Means for every power factor, there is its own maximum efficiency.
This is its maximum for 0.6 power factor. This is the maximum for 0.8 power factor. This is the maximum for unity power factor. So every power factor operation offers its own maximum power factor, maximum efficiency. Find out that individually asked. If you are asked individually, keep that. If you are asked, find max efficiency for 0.6 power factor lagging. Simple. Put here 0.6, put here 0.6. Finished. Lagging or leading, same answer. Lagging or leading, same answer. No difference at all. Now let us move on to the next question. Tell me what is the answer here. For 0.8 power factor lagging, tell me the answer. What is max efficiency? Tell me the answer. 96 point. (96.22% is operating efficient max efficiency at operating at 0.8 power factor. Now max efficiency means somewhat slightly higher. That's what in the first questions you have seen marginally, slightly. You won't see big major differences, slight difference will be there for sure. (96.95) right? 96.22, 96.95. Thank you for your answers. This is maximum efficiency. This is also maximum efficiency, but that's the change. 96.95 is maximum efficiency when the transformer operated at unity power factor. This is 96.22 when the transformer is operating at 0.8 power factor. Similarly, if you calculate transformer operating at 0.6 power factor lagging, just put here 0.6, 0.6, you will get lesser value. So everyone is maximum efficiency, but if you are simply given maximum efficiency, you must find out this. If you are expressed anything, find maximum efficiency at this power factor. If you are not given, you must find out maximum efficiency for unity power factor only by keeping 1. This one. Now let us see one question on auto transformers. A single phase 50 kVA 250 by 500 volt 2 winding transformer has an efficiency of 95% at full load unity power factor. Its maximum kVA rating as an auto transformer and its efficiency at full load unity power factor are. This is a common question you will be finding out in GATE. If you look back the previous year questions,
Many questions are there on auto transformer. It will be like, there is a two winding transformer which is reconnected as an auto transformer. Don't assume as a practicality. It's not that you are practically using a two winding transformer reconnection as an auto transformer. It's not that actually. They will be asking, what if there is a two winding transformer, if you reconnect as an auto transformer in that way, in this way, for this possible voltage ratio or for that possible voltage ratio in additive polarity, in subtractive polarity, sometimes they will give you a figure, sometimes they will give you a guidance. They will guide you based on, like for example, 250 by 500 is there. They will give you, it is used as 250 by 750 auto transformer or 500 by 750 auto transformer. They will guide you like that. So any possibilities are there. In the class, I will be showing you 8 connections. If you have a two winding transformer, you can use it like an auto transformer in 8 possible ways. In that, I'll show you one best connection and one worst connection. Best connection is HV as common. If you're given a question, what is the maximum possible auto transformer rating from a two winding transformer reconfiguration case, then directly make like this: HV as common winding, additive polarity. That's the best possible or maximum rating you are going to get from a transformer. Remember, when you are solving auto transformer questions, an auto transformer which is reconfigured from a two winding transformer compulsorily maintain voltage ratings and current ratings same. I am repeating. This is the voltage rating of LV side. This is the voltage rating of HV side in a two winding transformer. This is the current rating on LV side. This is the current rating on HV side of a two winding transformer. Now, when you reconnect a two winding transformer into one winding transformer, auto transformer,
By connecting both windings in series as one winding, must maintain voltage rating, current rating, compulsory. Otherwise, your question is technically wrong. If you maintain that, you are right. HV common means 500 volt winding common to input output side. That's the meaning. You know, one winding transformer, auto transformer is having one winding which is common to which one portion is common to input and output sides. You know that. So two windings we are making into one winding. This is LV winding, this is HV winding. Now HV as common to input side as well as output side. This is 500 volt winding. This is 250 volt winding. Now compulsory additive polarity. If you want maximum rating, additive polarity. This is 500 by 750 volt auto transformer. $500 by 750 volt auto transformer. Additive polarity HV is common. So there is no need to connect like this only. You can connect other way also. 750 by 500 auto transformer also you can connect. This will be input side, this is output side. Anything you can connect, both will give you same answers. Follow the same steps what I do now, you will get the same answer. Anyway you can do. So additive polarity, to communicate that I am keeping dots here. Additive polarities. Plus minus of the winding, plus minus of the winding. If you put two batteries, plus minus, they will add like that. Additive polarity, 750. Now, you must mark, first step is, go to the single winding and mark what is the current rating of that winding. For example, 250 volt winding, what's the current rating? 200 ampere. So, if you connect a load now, imagine you are connecting a load here. Then the current what should flow in this winding must be absolutely its rated current only, not more than that. That's the rated current, that's the target. So what is the capacity of this winding? Capacity, current rating of this winding is 200 ampere. So this winding should carry only 200 ampere, not more than that. Finished. Fix it. Now, what is 200 ampere current flowing into the load means I2. This is I2. What is this? I2. What is this? V2. Voltage across the load, V2. Current flowing into the load, I2. So, kVA rating, capacity of auto transformer. So simple.
V2 I2 or V1 I1. Here V2 I2, let us say V2 I2. That's it, 150 kVA. Simple way to find out rating of an auto transformer. Next, you have to find efficiency. To find efficiency, we know rating, and for which load we can calculate. For full load means into 1, unity power factor means into 1 again, like that. What is required here is losses, because in efficiency formula you will notice output by output plus losses. So we need losses. For that, in these type of questions, common thing is you will be given first efficiency of a 2-winding transformer. Check. The 2-winding transformer has efficiency 95% at full load unity power factor. First, 50 kVA transformer output. Output at full load at unity power factor is 50 kilowatt. 50 kVA full load unity power factor into 1, 50 kilowatt, right? Now, output 50 kilowatt. Efficiency for this particular load is given 0.95. So, input is 50 by 0.95. Now see this, given output, from efficiency calculate input. From the difference of input and output we get losses. Losses of a 2-winding transformer operating at full load, right? This is the loss. Now remember, this number can be used in auto transformer case now. Definitely you will think on what basis we can use like that. There is a basis for it. What is that basis is, when it was a 2-winding transformer, the voltage across the windings 250, 500. When it is now used as an auto transformer, now also across the windings we are preferring the voltage to be absolutely same. We are not changing the voltage rating first of all. Number 2, when it was a 2-winding transformer previously, current rating is 200 ampere in LV side, 100 ampere in HV side. Okay.
Now if it is used as auto transformer, now also here 200 ampere, here 100 ampere. If you think how 100 ampere is here, let us see. You know, in transformer V1 I1 is equal to V2 I2. So what is I1? V2 I2. What is V2 I2? 150 kVA by V1. What is V1? 500. Someone asked, Satya, please explain how to decide current direction in the common winding also. I am coming to that point. Listen carefully. I1 is 300, right? This is input side, this is output side, right? So V2 I2 should be equal to V1 I1. This is a transformer concept what you already know. In every case we use that line only. V1 I1 is equal to V2 I2. So you know now V2 I2, you know V1. From that what we found out? I1. Now here you have to apply KCL, simple KCL. 300 ampere entering this node, 200 going up. What's remaining? 100 coming down. If you listen the class theory, I explain 8 connections. I will tell one common line at the end of the connections. In step up auto transformer, current in the common portion will flow down. In step up, current will flow down. In step down, current will flow up. You can check. So finally you understood now how to find current rating in the common winding. Observe carefully one thing. What is the current rating of the common winding? Previously 500 volt winding current rating is 100 ampere. See, we are not violating current ratings in the windings. We are not violating voltage ratings. Therefore, iron loss depends on voltage, copper loss depends on current. That's it. Iron loss depends on voltage, operating voltage across the windings. Copper loss depends on the current flowing in the windings. So, in two winding transformer, what is the voltage rating, what is the current rating in those windings? When it is reconnected as an auto transformer, here also the voltage rating and the current rating of the windings has not been changed. That's the reason why you can directly take losses of a two winding transformer are exactly equal to losses in auto transformer in this particular case. Don't misunderstand the logic. Generally we say auto transformer has lesser loss compared to a two winding transformer. If you bring that line here, you will get confused. That line is for same rating. If you say in a given auto transformer, generally losses are definitely reduced compared to a two winding transformer. Remember, if this line when you read, that is for same rating. If that comparison is for same rating, means 50 kVA two winding transformer, 50 kVA auto transformer. Like that if you are comparing, then in a 50 kVA auto transformer, if K value is near to unity, definitely the losses are really small compared to a two winding transformer. Now we are not talking about that case.
We are talking about a particular two winding transformer, same two winding transformer reconnected as auto, and we are using for same voltage, same current ratings. What happened here? KVA rating enhanced. See, from 50 kVA, KVA rating enhanced like anything. What's the reason? In the class we see, because of conductively transferred power. That's the reason. So now how to find out efficiency? Simple. You know rating and you know losses and you know for what factor. For example, efficiency of auto transformer is, first, what is the output? See, for what output you are asked? Full load. Efficiency at full load means N is 1. At which power factor? Unity power factor means 1 into 150 kVA into 1 by 1 into 150 kVA into 1 plus 2.63 into 100. Output for this load, for full load, for unity power factor. Efficiency must be calculated for this loading condition, full load, unity power factor. This is the rating of the auto transformer. So N into rating into power factor. This is the output at that loading. Output by output plus losses, percentage efficiency. So thank you for those answers. 98.27%. Now tell me why efficiency increased in auto transformer case. The question is, previously what is the efficiency if it is a two winding transformer? 95%. Now what is the efficiency when the same two winding transformer is reconnected as auto transformer? 98.27%. Why efficiency increased? What's the answer? So I saw two answers. One is because KVA increased. Another answer I saw because losses decreased. Generally what we think is why efficiency is increased? Because losses decreased. If losses are reduced, efficiency will increase. Don't apply that logic in these cases. Efficiency is not increased because losses are decreased. Losses are absolutely same in these two cases. If you think why losses are same in these two cases? Simple logic. If you say this is winding A, if you say this is winding B, if this is A, if this is B, in A how much current is flowing there? 200 previously. Here also 200 only. In B previously how much current is flowing? 100. Here also 100 only. You are not violating the ratings. Current ratings you are not violating. Voltage ratings you are not violating. So losses in a transformer depends only on V and I. If you operate for rated V, rated core loss. If you operate for rated I, rated copper loss. That's it. So losses in both cases are same. But why efficiency improved? Because capacity, output,
rating, all are same. Different names, same meaning. Rating, capacity, output increased. That's why efficiency increased. So one student, Pramila Devi, asked a doubt, how 50 kilowatt came? This is 150 kilowatt. What is this? 150 kilowatt. 150 kilowatt by 150 kilowatt plus 2.63 kilowatt. What is 2.63 kilowatt? Losses. What is 150? Actually, it's 150 kVA. 150 kVA, this side N is there, that side power factor is there. If you multiply N, that is loading condition. Full load means 1, half load means 0.5, 3/4 load 3 into 0.75, like that. This is loading condition, that is power factor. You know, input is output by efficiency. Input is output by efficiency, or output by input is equal to efficiency. On that basis, you know 50 kVA is output. 50 kVA is what? Output. Now operating at full load means 1 into 50 into 1. Operating at unity power factor, 50 kVA convert into kilowatt. Simply multiply with 1, it will become kilowatt. Cos phi, kilowatt by kVA. Cos phi is kilowatt by kVA. Kilowatt is kVA into cos phi. Kilowatt is kVA into cos phi. What is cos phi? 1. Clearly given unity power factor, operating at unity power factor. So 1. Kilowatt is equal to kVA. So remember, whenever rating is given in a question, you must consider it as output only. If you see rating of a question given, whether it is transformer, whether it is induction motor, whether it is synchronous, whether it is DC machine, wherever you go, rating of a machine is given means immediately you have to take it as output. Whether it is motor, whether it is generator, whether it is transformer, rating communicates you output at rated load. Rating communicates you output at rated load. This point I will tell you in the next question when I start induction. Hope you understood. Student named Raw, R-A-W, and now Gautam. If you see this question and if you think auto transformer capacity is the best, yes, you are right. If you listen to my class, I will tell you one line. You will see auto transformer is really best compared to winding transformer, no doubt. When it comes to ratings, when it comes to regulation, when it comes to efficiency, all these things. When it comes to savings in copper, all these things. But I'll tell you one line. These all are good if auto transformer K is nearer to 1. Remember this line. If auto transformer K means LV by HV, ratio I am talking, voltage ratio LV by HV, K is nearer to 1, nearer to unity, then only
auto transformer is advantageous compared to a two winding transformer. This will kill the basic aspect of a transformer actually. Why we are using a transformer generally? 11 kV to 33 kV, 33 to 220 kV. There are transformers in power system, practical power system, there are transformers which are stepping up 33 to 220 kV directly. Practical I am talking like that. See, 33 to 220 kV they are stepping up directly. See what is K now? Auto transformer is beneficial if and only if you use it K nearer to 1. That's why if you want to use an auto transformer with a large benefit, you have to use for a near voltage ratios. That's the reason why we don't prefer it in actual power system. I want to give you a briefing on power stages of induction motor first to deal this set of questions. Stator, rotor, shaft. Between stator and rotor there is a 1 to 2 mm gap, imagine. When you apply 3-phase supply across the stator, rotating magnetic field is produced.
It will cut the rotor, produce voltage, produce current, produce torque, and the rotor is rotating. We'll connect a load across the shaft and we take the output. Mechanical power output, electrical power input, mechanical power output. In this process, stage wise, there are losses happening. First, there will be a loss happening in the stator copper loss, stator core loss. In the stator core, there is stator core loss. In the stator core, there is a stator winding, three-phase winding, stator copper loss. Similarly, there is rotor core and rotor winding or rotor copper bars where rotor copper loss also exists. Rotor core loss will be always ignored in induction motor analysis. Why we ignore rotor core loss means rotor frequency under running condition is S into F. Slip is really a very small value. When you see in questions 1%, 2%, 3%, 4% like that. Very small value. When slip is generally 0.01, 0.02, 0.03, SF is a very small value. That's why we generally ignore rotor core losses. In the questions, in induction motor questions, whenever you see core loss, don't take them as rotor core loss. You have to take them as stator core loss only, whether they mention or whether they don't mention. Core losses means they should be taken as stator core loss, nothing like rotor core loss. Don't give any share to it until unless they ask in the questions. Generally, rotor core losses are ignored. Next. That's why I wrote only rotor copper loss here. In the stator, there is stator copper loss, stator core loss. In the rotor, rotor core loss is ignored, only rotor copper loss. After that, there is friction and windage loss, also called as mechanical losses. So, the input what you give to the stator will have an amount of loss. For example, imagine some input went on to the stator. Imagine 6% is lost in the stator. What's the remaining output? 94%. Okay, 94% is the output of stator output. Stator output is equal to rotor input in induction motor. Reason is, this is basically air gap power, is basically magnetic field, rotating magnetic field. So when the magnetic field is transferring from stator to rotor through air gap, in the air there is no eddy current loss. In the air there is no hysteresis loss. If you take a transformer, in the primary, when you apply voltage, there is a current flowing, a flux is produced. This flux is in the magnetic core. When the flux is existing in the core, that alternative flux produce core losses. Because core is made up of steel, in the steel there will be eddy currents, in the steel there is hysteresis property, so hysteresis loss will occur. But now when the power is transferred from stator to rotor through air gap, air don't contain any kind of these losses, hysteresis loss or eddy current loss. Therefore, stator output is exactly taken as rotor input. In induction motor questions, remember one line. Stator output is equal to rotor input is equal to air gap power. It is called as air gap power. Remember that point. Stator output or rotor input, anything called as air gap power. Next. Rotor input is 94%. Imagine 3% is lost in the rotor. 3% is lost in the rotor as rotor copper loss. What is the rotor output? 91%.
After losing 3% of power from the air gap power, the rotor output is 91%. Okay, hope you understood. I'm putting a number so that you will easily understand the logic. Next, let us imagine friction and windage loss is 1%. When friction and windage loss is 1%, what is the ultimate output or shaft output or simply output of the motor? 90%. So, output is 90%, efficiency is 90%, like that you can say. Now, what I want to convey is, if you read this question, two things I have to convey. One is, whenever you see core loss, you have to consider it as stator core loss by default. Don't think, is there any share in the rotor core loss? It is not mentioned, stator core loss or rotor core loss, nothing. In induction motor, induction machines, normally under running conditions, we ignore rotor core loss, which means core losses always constitute stator core losses only. Next, one more thing. Second thing what I want to convey in this question is rating of the motor, 30 HP. Rating or capacity. Of motor is 30 HP. 30 into 746 watts generally. That is rating of the motor. Remember always, wherever you see induction, transformer or anywhere, when you are given rating, it should be taken as output at rated load condition. Remember this line. Rating is to be considered as output. At which load? Not all loads. Different loads give different outputs. For example, a machine is operating at no load. Output is 0. 30 HP motor is operating just like that without any load on the shaft. 30 HP motor only, but load is 0, operating at no load. What is the output? 30 HP motor output is 0. Simple. So, what is rating? Rating is output at rated load, also called as full load. Any word, both are same meanings. General confusion of what is rated load, what is full load, both are same. 1 liter water bottle contains 1 liter water. Full rated, that's the meaning, like that. Both are same. Now, what I want to convey in this question is, this number will be used if the question contains this motor is operating at full load or this motor is operating at rated load. We can use like that. Authentic. That is very authentic. Sometimes they won't give anything. Then also you can use this number. If they don't mention anything in the question also, means you have no option. If you have no option, you have no confusion. No problem for that. But here in this question, there is a common confusion like this. Two things are given. One is output, other one is input also. If you notice, this question contains input value, this question contains output value also. Both are given in the question. And the problem is, you have to use any one. You cannot use both values, because if you use both, you won't get the same answer. To find out air gap power, one option is
Stator input minus stator loss. That is one option. What is the other option? Simple. Rotor output is shaft output plus friction and windage loss. Why? Because rotor output minus friction windage is equal to shaft output, right? Simple logic. This minus this is equal to this, like that. Now, what is rotor output? Rotor output is shaft output, already known to you, plus friction and windage loss. So, when you think rotor output, now you got rotor output. Now, if you add plus rotor copper loss, now you will get rotor input. If you come from output side, you will get an answer. If you go from input side, you will get an answer. Those two answers don't match. Then how this question is made? This question is made very clearly. Nowhere it is mentioned the motor is operating at full load. Nowhere it is mentioned the motor is operating at rated load. Check. Motor draws 50 ampere current at 0.8 power factor lagging. Stator and rotor copper loss are given. Friction and windage loss are given. Core losses are given. Air gap power of the motor will be. That's it. So, as nowhere in this question it is mentioned the motor is operating at rated load or full load, rating has no meaning now. Rating cannot be taken into account because the motor is not operating for rated condition. How can you say like that? How can we say like that? Means it is very clearly given, motor is asking 50 ampere current. Motor is taking 50 ampere current, which is very authentic. Authentically they said motor is drawing 50 ampere current from 400 volt supply with a power factor 0.8. Very authentic. So in this question, input is given. In this question, output is given, but in these two, what is authentic is input, because there is no guarantee that this motor is giving rated output, because it is not mentioned the motor is operating at rated output condition. Input is root 3 V I cos phi. VL, IL, cos phi, line values. Directly take like this. Input is root 3 into 400 into I is 50 into 0.8. Now you know input of the motor. Once you know input, what is stator output? Simple. If you know stator loss, we can calculate stator output, right?
if you calculate the same question through output side, this value is 22380 watts. Output of this machine, rated output of this machine is 22380 watts. Now, if you add friction windage loss plus rotor copper loss, you will get air gap power, but it is not the same answer. What is the meaning of that is, for this input, this is not the output, or for this output, this is not the input. This is rating of the motor, and there is no guarantee that the motor is operating at its rated condition, because if you have a particular motor with a rating, it can be used anyway. No load, full load, sometimes more than full load, sometimes 50% load, 10% load, any load. So for particular loads, they have particular inputs, right? Like that. This question don't contain this is the output for this input, or this is the input for that output. It's not like that. Both are independent in nature. So we cannot get the same answer from input side, output side in the same way. You have to select any one according to the conditions given in the question. If the question contains machine operated at rated load or full load, you must take output value as authentic value. If it is not given, if you have another option given as input, check. If rated or full load is not given, input is more authentic. Input is authentic, you have to take it and you have to solve from the input side. I want to give you one more concept. In the previous question, we have found air gap power. In this question, same air gap power, but this question contains equivalent circuit parameters. You should know how to calculate air gap power in a power stage question. You should know how to calculate air gap power in equivalent circuit question also. Both are different ways. First, as you know, this is standard equivalent circuit of induction motor. When we are solving questions, we can directly add R2 dash plus R2 dash by S minus R2 dash gives R2 dash by S generally. So first substitute all the given things in the question.
R1 value 0.1, X1 value 0.21, XM value 10 ohms, R2 dash 0.07 by what is the operating slip? 0.05, X2 dash value 0.21, star connected 208 volt, 208 by root 3, line value by default. This is the question given. R1, X1, R2 dash, X2 dash, XM. These 5 parameters are common. Rotation loss will be given naturally to find out the output. In this question it is not required. Now it is operating at a slip 0.05. In this question what you are asked is find air gap power. There is one standard way, I want to tell that. Simple and standard way. In equivalent circuit questions follow this. First step what I have to do is combine that branch, find its equivalent, means first step what you have to do is combine those two parallel branches. J10 in parallel with this is 1.4, this is J0.21. Find what is RF value. Make it in R plus JX format. R plus JX format. And tell me this number. What is RF value? RF can be treated as resistance to find air gap power. This RF can be treated as resistance to find air gap power. When I am explaining power stages in the class, I will write one line like this. Rotor copper loss is slip times rotor power input. So, rotor power input is rotor copper loss by slip. Rotor power input is nothing but air gap power. Rotor power input is nothing but air gap power is rotor copper loss by slip, means 3 I2 square R2 by S. Okay. So, here imagine the current is I2 dash. Imagine the current is I2 dash. What is this? R2 by S. I2 dash square R2 by S is air gap power per phase. If you put into 3 for 3 phases, this is the logic. If you can calculate what is the current in this branch, that I2 dash square into 1.4 gives you simply the answer, but it will take more time. Best way, easiest way is do one thing. Combine these two, you will get
this is 0.1, this is J 0.21, this is RF, this is JXF. This is 208 by root 3. This you can treat like a magic number. This is resistance to find air gap power. You can find out I2 dash and that square multiplied with 1.4. That is one way. Easiest way is combine these two, you will get this branch. Then find out what is I. What is I means? I is equal to 208 by root 3 by total. Find out total. Now air gap power is 3 I square RF. That's it. That's the best way and easiest way. 3 the total current I passes the branch, 3 I square into RF. Now here you have to find out I2 dash means it's take more time. This is the best way. You can consider all the decimals and you can write out with the decimals. I am writing approximately by ignoring some decimals. This is the standard way to find out air gap power in equivalent circuit questions. This is the standard way to find out air gap power in power stage kind of questions. You should know the difference between these two depending on the data. When you see the question, how to deal, you have to understand it. This is power stage and this is equivalent circuit question.
Thank you for the answers. Kindly stay tuned. Within few seconds, my colleague will take over the session. हेलो आवाज़ आ रही है? ओके, सो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ मी, दिस इज राजन रॉय। और जस्ट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डीसी मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन फ्रॉम माय साइड। ठीक है, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया, काफ़ी कुछ सीखा, अभी और भी हम डिस्कस करेंगे, राइट? चलो, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डीसी मशीन से। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पे मैं सॉल्यूशंस आपको बताता चला जाऊँगा। और बताने से पहले एक और डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है कि ऑलरेडी जीटीक्यू भी आप लोगों ने देखा होगा, है ना? अभी 2 दिन पहले ही डाला गया है। तो जो जीटीक्यू में क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, राइट, कोशिश किया है थोड़ा सा उससे हटके यहाँ पे मैं क्वेश्चंस डालूँ, ताकि दिस इज ऑल्सो गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट योर प्रिपरेशन। ठीक है, क्लियर है? चलो, पैरेलली भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ, राइट? जैसे क्वेश्चन का स्नैपशॉट ले लेना और फिर अपना सॉल्व करना मेरे साथ और आंसर बताना। तो चलो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ए डीसी सीरीज मोटर रन्स एट 1100 आरपीएम टेकिंग 90 एम्पियर, ठीक है, फेड फ्रॉम 110 वोल्ट सप्लाई। ठीक है जी सर, हो गया, बना दिया, एक डीसी सीरीज मोटर बना दो। चलो, मान लो सपोज दिस इज योर डीसी सीरीज मोटर, राइट? दिया हुआ है 110 वोल्ट सप्लाई। अच्छा, what resistance would be connected in parallel with the field circuit to obtain a speed of 1500 rpm? होता क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करना तो दैट्स फाइन, सॉल्यूशन है, फटाफट मैं बता दूंगा, लेकिन उस क्वेश्चन के पीछे की फिलॉसफी भी थोड़ा समझना, ताकि अगर कुछ नए बच्चे भी होंगे तो उनको भी काफी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, पॉइंट ये होता है, दिस इज योर फील्ड वाइंडिंग, ऑलरेडी यू नो दैट, राइट? दिस इज योर आर्मेचर रेसिस्टेंस इनसाइड दिस, राइट? सो नाउ what is the concept? एक चीज और समझ लो, पूरे डीसी मशीन सेशन में 2 फॉर्मूला जरूर दिमाग में रखना, जो भी नए बच्चे भी होंगे उनके लिए भी बता रहा हूं। EB इज इक्वल टू K5 ओमेगा एंड टॉर्क इज इक्वल टू K5 इंटू IA। एंड जनरली व्हाट आई वांट टू से यू, और क्लास में भी क्या बताता हूं, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपके अंकल का घर है, ठीक है, और बीच में कई बार एक कनेक्टिविटी होती है ना, पैसेज होती है ना, जो दोनों को कनेक्ट करता है, तो वो ये टर्म हो गया K5। कहोगे सर इसका मतलब? तो देखो, जनरली 90% डीसी मशीन क्वेश्चन में क्या होता है, ओमेगा, EB यानी कि वोल्टेज, और करंट और टॉर्क, ये 4 वेरिएबल होते हैं
आपको जनरली यही देखने को मिलेगा एंड इन्हीं चारों में से किसी को वेरी करेंगे और किसी दूसरे की वैल्यू पूछेंगे, राइट? क्लियर है? लेकिन इनमें कॉमन क्या होता है? ये k phi कॉमन होता है। सर k क्या होता है? दैट k इज pz बाय 2 pi a, z इज नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ पोल्स, a इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। और जनरली ये किसी भी मशीन के लिए, किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए, बिकॉज एक बार डिजाइन हो गया तो कंडक्टर तो चेंज करोगे नहीं, राइट? पैरेलल पाथ ये सब इंटरनली डिजाइन में रहता है, राइट? तो यू आर नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज दीज ऑल थिंग्स जनरली आफ्टर डिजाइन। दैट इज वाई हम इसको क्या करते हैं? कांस्टेंट लेते हैं किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए। दिस इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट बट दिस इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मशीन। क्लियर है? अच्छा, तो ये एक तरह से ऐसे समझ लो पूरे डीसी मशीन में ये 2-3 बातें दिमाग में रखना, बाकी सारे क्वेश्चंस होते चले जाते हैं, ठीक है? तो अब सर ये क्वेश्चन में क्या करना है? तो देखो होता क्या है, यहां पे देखो तो ये जो स्पीड है, जब क्वेश्चन स्पीड से रिलेटेड हो तो ये जरूर इक्वेशन आपके दिमाग में आना चाहिए। अच्छा सर, तो जो स्पीड है समहाउ किससे रिलेटेड है? सर ईबी से रिलेटेड है और फ्लक्स से रिलेटेड है ना? यस सर। तो नाउ सपोज this is the current, suppose series field current. So if I am going to change this current, then flux will change. Yes sir, of course. और फ्लक्स चेंज होगा तो कहीं ना कहीं स्पीड भी चेंज होगी। हाँ सर, ऑफ कोर्स। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला पार्ट कुछ दे दिया, जनरली सभी क्वेश्चन में देखो यही होता है कि ये है, ऐसा चल रहा है। अच्छा, बाद में कहेगा तुम्हें कि अच्छा ये बताओ, ये कर दिया, क्या कर दिया? कभी डायोड रेसिस्टेंस ऐड कर देंगे, जैसे इसमें बोल रहा है कि इसमें एक रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, इसको बोलते हैं डाइवर्टर रेसिस्टेंस। Why this is called as diverter resistance? Because whatever current is coming here, you are going to divert some of the current from this path, correct? And because of that, the series field winding current will reduce. Yes sir. And as this is going to reduce from here, तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। हाँ जी सर। फाइनली टोटल करंट उतना ही जाएगा जितना करंट आ रहा था। देखो यहां पे आकर के फिर दोनों करंट ऐड हो गए, सेम करंट जा रहा है, राइट? लेकिन यहां पे थोड़ा सा हमने डाइवर्ट किया और डाइवर्ट करके थोड़ा सा फ्लक्स को क्या किया? चेंज कर दिया जितना हमें चाहिए। सबको समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। तो बस अब यानी कि क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो पहला पार्ट ले लें। तो यानी कि जब डाइवर्टर रेसिस्टेंस नहीं है, मान लीजिए दिस इज नॉट देयर, तो जब ये नहीं है, सपोज मैं पहला पार्ट कहता हूं इसको, जब वो नहीं है ना, आर डी इज नॉट देयर, मान लीजिए ये नहीं है। क्लियर? राइट? ठीक है। तो बताओ मुझे क्या होगा? तब तो सर जो सीरीज फील्ड करंट होगा दैट इज आर्मेचर करंट ऑल्सो। दोनों सेम ही करंट होंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा, ये बात दिमाग में रखना आप। अच्छा, दूसरी बात एक और क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, राइट? कि टॉर्क कांस्टेंट है, राइट? क्लियर है? और मैग्नेटिक सर्किट क्या है? राइट? इज अनसैचुरेटेड। देख रहे हो, सेम लोड टॉर्क बोल रहा है। सेम लोड टॉर्क का मतलब टॉर्क कांस्टेंट है, राइट? तो मुझे ये बताओ टॉर्क का रिलेशन क्या है? K phi IA। तो इफ टॉर्क इज कांस्टेंट, अच्छा आपको लगेगा कि सर इसमें तो लिखा हुआ है सेम लोड टॉर्क। एक्चुअली क्या होता है जरा समझना, ये मैकेनिकल टॉर्क है और ये इलेक्ट्रिकल टॉर्क है। बोथ आर गोइंग टू अपोज ईच अदर, तभी एनर्जी कन्वर्जन होगा। ऑलरेडी यू नो दैट, राइट? तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है? बोथ द टॉर्क्स आर सेम, तभी तो एक कांस्टेंट स्पीड पे वो चलता रहेगा, व्हाट एवर स्पीड इट इज, राइट? तो इसलिए सेम लोड टॉर्क का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है? क्योंकि दोनों क्या होगा? सेम होगा। चलो जी देखते हैं। तो टॉर्क कांस्टेंट का मतलब बताओ, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूं? फाई 1 IA1 इज इक्वल टू फाई 2 IA2। यस सर, व्हाई नॉट? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, एज्यूम द मैग्नेटिक सर्किट इज अनसैचुरेटेड। मैग्नेटिक सर्किट अनसैचुरेटेड का क्या यूज है यहां पे? इसका मतलब ये होता है सिंपल BH कर्व में कि हम लीनियर कंडीशन को फॉलो करेंगे। B का मतलब क्या बताया था? फ्लक्स। H का मतलब करंट, जो भी फील्ड करंट आप दे रहे हैं, राइट? तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू IF, फील्ड करंट। कौन सा फील्ड करंट है यहां पे? सर वो सीरीज करंट हमने नाम दिया है। दैट्स फाइन, ओके, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे? I series 1 into IA1 इज इक्वल टू I series 2 into IA2। बताओ
yes or no, because this flux is going to set up by series current, ठीक है। और आर्मेचर करंट अलग है, क्योंकि आर्मेचर करंट में तो दोनों का सम आएगा। लेकिन सर पहले तो दोनों सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, आप लिखिए ISE1 के जगह आप IA1 लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, IA1 का स्क्वायर इज इक्वल टू I सीरीज 2 इंटू IE2। तो एक इक्वेशन यहां से आ गया आपको, हाँ सर आ गया, इसको रख लो, मान लो इक्वेशन नंबर 1 कुछ नाम दे दो, जब हमें जरूरत होगी हम उसको यूज करेंगे। अच्छा सर, तो यानी कि ये टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, टॉर्क कांस्टेंट का यूज किया हमने, यस सर। और ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इज अनसैचुरेटेड, तो उसका यूज कर लिया हमने, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और आरडी अभी नहीं है, तब हमने ये कंडीशन होगा तो उसका भी यूज कर लिया। अब क्वेश्चन में ये है कि जब आरडी होगा तब क्या करेंगे। अच्छा, पैरेलली एक काम और करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं जरा ईबी का इक्वेशन बताओ, तो क्या लिखोगे, ईबी प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू या फाई 1 इंटू N1 लिख दो, करेक्ट, ठीक है। इसको EB1 नाम दे देता हूं पहले कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, तो अब फाइनली कैन आई राइट EB1 प्रोपोर्शनल टू फाई 1 के जगह कितना लिख दो, फाई इज प्रोपोर्शनल टू सीरीज फील्ड करंट, हाँ जी सर, तो I सीरीज 1 इंटू N1, ठीक है। सिमिलरली EB2 क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू EB2, मतलब अब जो RD है करेक्ट इज नॉन जीरो, यानी कि अब RD पिक्चर में आ चुका है, मान लीजिए, ठीक है, कुछ ना कुछ हमने इसको रखा है, राइट। तो अब अगर मान लीजिए RD यहां पे पिक्चर में आ चुका है, यहां RD नहीं था, अब RD आ गया, तो EB2 मान लीजिए उस टाइम में सीरीज फील्ड करंट कुछ और हो गया होगा, तो दैट इनटू N2, क्लियर है, हाँ जी। तो दोनों कंडीशन में कैन आई राइट EB1 बाई EB2 रेशियो, हाँ जी सर बिल्कुल। अच्छा, आपको लिखना हो तो थोड़ा सा पॉज करके बाद में लिख लेना जब लाइव खत्म हो जाएगा, अभी फास्टली सॉल्व कर सकते हो तो करो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है, चलिए जी। अब EB1 बाई EB2 क्या हो जाएगा बताओ, EB1 बाई EB2 इज इक्वल टू I सीरीज 1 N1 अपॉन I सीरीज 2 इंटू N2, राइट। और I सीरीज 1 देखो तो I सीरीज 1 किसके बराबर है, IA1 सर, तो कैन आई राइट एट द प्लेस ऑफ I सीरीज 1 IA1, ऑफ कोर्स N1 अपॉन I सीरीज 2 इंटू N2, ये भी रिलेशन हो गया, हाँ जी सर हो गया। अब मुझे ये बताओ, जब हमने ये रिलेशन लिख दिया तो ये वैल्यूज भी हम पुट कर सकते हैं, बिल्कुल सर पुट कर सकते हैं। तो व्हाट इज दिस वैल्यू, चलो एक काम करते हैं, व्हाट इज EB2 नाउ टेल मी, तो सर EB2 इज इक्वल टू दिस इंटू EB1 अपॉन दिस, हाँ जी, तो क्या था I सीरीज 2 इंटू N2 कितना है 1500 अपॉन IA1 बाय N1, यानी कि 90 इंटू कितना है 1100, ठीक है, इंटू अब आ जाइए व्हाट इज EB1, तो EB1 V माइनस ड्रॉप, हाँ जी, तो कितना है 110 माइनस 90 इंटू 0.08 प्लस 0.06, सारे ड्रॉप हम एक साथ लिख लिए, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो क्या रिलेशन आया फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रिलेशन विल बी हाउ मच इट इज EB2 is equal to 1.476 into I series 2, right? So this is the relation what we got, clear? तो एक रिलेशन यहां से मिला था आपको, दूसरा रिलेशन हमें यहां से मिल गया। अच्छा सर, तो टेल मी व्हाट इज EB2 इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, तो सर EB2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 110 माइनस 0.08 इंटू I2, करेक्ट, I2 बिकॉज आर्मेचर रेसिस्टेंस के पास आर्मेचर करंट जा रहा है, राइट, और दूसरा वाला ड्रॉप कितना है 0.06 इंटू सीरीज फील्ड, ठीक है, क्लियर है, राइट। अच्छा, तो अब देखना ये ठीक बात है, हाँ जी, माइनस मैंने इधर लगा दिया है पूरा ब्रैकेट में, इसीलिए प्लस साइन है, ये मत समझना माइनस दिस लिखना था, ठीक है। चलो, और दैट इज इक्वल टू ये EB2 इज इक्वल टू कितना है ये वाला टर्म 1.476 इंटू I सीरीज 2,
करेक्ट। इसको मान लीजिए मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज दिस इज अगेन इक्वेशन बिटवीन आर्मेचर करंट एंड सीरीज करंट, ठीक है। और आर्मेचर करंट सीरीज करंट का एक और इक्वेशन यहां भी है। हाँ जी सर बिल्कुल। तो अगर मैं 1 और 2 को सॉल्व करूं, IA1 तो पता ही है, ठीक है, मतलब I सीरीज 2 और IA2 के बीच में दो इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 वी विल गेट आवर अननोन वैल्यू। चलिए जी देखते हैं। ओके, तो सॉल्विंग 1 एंड 2 कितना आ जाएगा बताओ। IA2 कितना आया, 124.35 एम्पियर, ठीक है। अगर कई बार क्वाड्रेटिक वगैरह आता है तो उसमें जो हाइयर वैल्यू होता है, निगेटिव वैल्यू होता है, कई बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहां से I सीरीज 2 कितना आएगा, इक्वेशन 1 में देखो, वहां से हम निकाल लेंगे, यानी कि 90 स्क्वायर बाय 124.35, हाउ मच इट इज, 65.14 एम्पियर, राइट। ये सिचुएशन आ गई है। हाँ जी, अब जरा यहां पे आ जाते हैं। तो सिचुएशन क्या है देखो, ये सीरीज फील्ड था, हाँ जी, इधर डाइवर्टर रेसिस्टेंस इज देयर, बिल्कुल सर, क्लियर। अच्छा, तो अब जरा करंट डिवीजन लगा दें। हाँ जी, तो कैन आई राइट I सीरीज 2 इज इक्वल टू R डाइवर्टर बाय R डाइवर्टर प्लस R सीरीज इंटू IA2। टोटल करंट को हम डिवाइड कर रहे हैं दो रेसिस्टेंस में, तो फ्रॉम हियर इसकी वैल्यू रख देंगे। IA2 पता है तो एक ही RD इज द अननोन, राइट। तो कितना हो जाएगा, दैट RD इज इक्वल टू 0.066 ओम, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। चलो, तो बाद में आप पॉज करके लिख लेना, अगर अभी कर रहे होगे सॉल्व तो करो। किया किसी ने सॉल्व? नमस्ते नमस्ते एवरीबॉडी, ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, थैंक यू। ठीक है, चलो ओके, चलो कोई बात नहीं, बाद में सॉल्व कर लेना, दैट्स फाइन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, क्योंकि यहां टाइम लिमिटेड है तो थोड़ा मैं फटाफट सॉल्व करूंगा ताकि आपको ज्यादा कंटेंट मिले, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन बेसिकली होता क्या है, स्पीड कंट्रोल जब हम करते हैं ना किसी भी मोटर का, तो फील्ड से भी अभी अभी देखा आपने, क्या देखा कि EB इज इक्वल टू K5 ओमेगा। सो सपोज यू आर गोइंग टू चेंज द फ्लक्स, तो स्पीड चेंज होगा। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं ये भी एक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सीरीज वाउंड फैन मोटर रन्स नॉर्मली एट दिस मच RPM, supply taking 20 ampere, the field coils are all connected in series। तो पहले केस में, केस 1 मान लीजिए, जब सभी क्या है, फील्ड कॉइल जितने भी हैं किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब बोल रहा है इफ द कॉइल आर रिकनेक्टेड, मैंने क्या कहा, वो दो तीन चीजें दिमाग में रखो, EB इक्वल टू K5IA, टॉर्क इक्वल टू K5 ओमेगा, टॉर्क इक्वल टू K5IA, EB इक्वल टू K5 ओमेगा, राइट। और हमेशा क्वेश्चन में देखो कुछ दिया रहेगा, ओ जी ऐसे 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 है, और बाद में अब बताओ ये चेंज किया तो क्या होगा, यही होता है ना क्वेश्चन में, इतनी सी बात है। बस प्रैक्टिस की बात है, थोड़ा प्रैक्टिस करो तो जल्दी होता है सॉल्व, स्पीड एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो चलो, तो पहले सिचुएशन ये था। अब क्या हुआ सर, तो अब आगे चल करके बोल रहे हैं कि जब इसको हम दो पैरेलल ग्रुप में, ठीक है, रख देंगे, राइट, तो क्या होगा, है ना, चेंजेस वगैरह। और बोल रहा है द लोड टॉर्क इंक्रीजेस एज द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। एक कंडीशन और दिया हुआ है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कि जो लोड टॉर्क है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अभी मैंने आपको कहा कि मशीन में लोड टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, बोथ आर अपोजिंग ईच अदर। तो स्टेडी स्टेट तभी होगा जब दोनों टॉर्क बराबर होगा, ठीक है। तो किसी कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहेगा, होता है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। तो ये भी गिवन है एक रिलेशन, यानी कि कैन आई से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। हाँ सर, क्यों नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होगा तभी तो स्टेडी स्टेट कंडीशन होगी ना। अच्छा, तो ये दो कंडीशन है जी। अब हमें आगे बढ़ना है और फिर हमें बताना है ना, स्पीड कितनी होगी उस कंडीशन में, राइट।
चलो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आप लिखना चाहें या फिर स्नैपशॉट ले लो फोन वगैरह से, ताकि क्वेश्चन आपके पास आ जाए। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूं, इसमें सॉल्व तो इसको हम करेंगे, ठीक है, सॉल्व इसको जरूर करेंगे हम, लेकिन 1 मिनट के अंदर कैसे इसको सॉल्व करेंगे पहले वही बता देता हूं, इसका शॉर्टकट, क्योंकि वो डेरिवेशन कर करा के ना वो आया है, क्विक रिवीजन कोर्स है ना, उसमें भी मैंने ये दिया था आपको, इफ यू कैन रिमेंबर। तो 1 मिनट में, इवन 30 सेकंड में सॉल्व करना हो तो उसका एक तरीका है मेरे पास, पहले वही बता देता हूं, फिर हम इसका जो तरीका है जैसे सॉल्व करते हैं उसमें चलेंगे। तो 1 मिनट वाला पहले देख लो। जब भी मान लीजिए ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, समझ गए, अल्टरनेटिव का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच की फटाफट कैसे सॉल्व करोगे। तो लोड टॉर्क दिया रहे अगर n टू द पावर x, x इज वेरिएबल हियर, जैसे यहां पे x कितना है 2 है, इस क्वेश्चन में x कितना है 2 है, तो देखो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो तो टाइम बचता है। देखो डिटेल में भी बताऊंगा अभी, चिंता मत करना, बट ये आपका टाइम बचाता है। 2 टू दी पावर 1 बाय x प्लस 2, ठीक है। तो सर इस क्वेश्चन में जरा लगाइए और बताइए, अरे लगाओ चलो। तो टेल मी व्हाट इज n2, 2 टू दी पावर 1 बाय 2 प्लस 2 इंटू n1 कितना है, हाउ मच, 600 ना, 600 राइट। अच्छा सर तो कितना हो जाएगा ये 713.52 आरपीएम। अच्छा ये हो गया, स्पीड आ चुका है, ठीक है। अच्छा और इसमें स्पीड भी पूछ रहा है, करंट भी ना, करंट भी पूछ रहा है। चलो करंट का भी एक ऐसा ट्रिक है, ठीक है, इसको जरूर सब लोग लिख लेना, कभी ऐसी जरूरत पड़े इस क्वेश्चन में तो फटाफट होगा ये। IA2 और इसमें जो रिलेशन होता है वो भी सुन लो, IA2 इज इक्वल टू, या IA2 बाय IA1, ये जो रेशियो है दैट रेशियो इज इक्वल टू, ठीक है, 2 टू दी पावर x प्लस 1 बाय x प्लस 2। तो सर इधर लगा के बताइए, बिल्कुल अभी बताते हैं। तो IA2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 2 इंटू वट इज IA1, IA1 कितना है, दैट इज 20 ना, 20 कितना आएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको फटाफट, 33.64। तो देखो भाई है ना, ये आंसर तुम्हारा आ गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, राइट। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये बेस्ट होता है, फटाफट लगाओ और आंसर पाओ, करेक्ट। अब चलते हैं जरा सा ज्ञान की बातें करेंगे हम कि कैसे आया क्या हुआ, लेकिन अगेन आई रिपीट, एग्जाम में जितना फास्ट फटाफट क्वेश्चन हो वो अच्छा है, ठीक है। ज्ञान सब है, ठीक है, दैट इज फाइन, लेकिन ज्ञान का जो एप्लीकेशन है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो चलो जी ये हो गया क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अब अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, ठीक है। चलो अब जरा देखो तो, जब ये सिचुएशन था, राइट, तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, लोड टॉर्क प्रोपोर्शनल टू n1 का स्क्वायर, मान लीजिए n1 स्पीड था, और हमें पता है दैट दिस टॉर्क इज ऑल्सो, डायरेक्ट लिख दूं मैं 5 इंटू IA1 या 5 इंटू IA1, राइट। एंड स्टार्टिंग में जो करंट था IA1 था मान लीजिए, तो क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट इज अनसैचुरेटेड तो 5 प्रोपोर्शनल टू करंट, जो करंट जा रहा है, हाँ जी, तो कैन आई राइट दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू IA1 स्क्वायर बिकॉज 5 प्रोपोर्शनल टू I, राइट सर। तो फाइनली क्या रिलेशन आया यहां से, N1 प्रोपोर्शनल टू IA1, एक रिलेशन हमें यहां से मिल गया, ठीक है, जिसका हम आगे चल करके यूज करेंगे। इसमें अगर हम आते हैं तो जरा देखना, इसमें क्या होगा, मान लो सपोज IA2 इधर आ रहा है, बट दिस IA2 इज हैविंग 2 पार्ट, हाँ जी सर बिल्कुल। तो जैसे ही ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो नाउ फ्लक्स इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, यस सर ऑफ कोर्स। तो चलो जी देखते हैं। तो नाउ I सीरीज 2, यानी कि जो उसमें करंट जा रहा है एक्चुअली, जो फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज IA2 बाई 2, नॉट IA2 बट IA2 बाई 2, ठीक है। अच्छा तो अगेन लोड टॉर्क प्रोपोर्शनल टू N2 स्क्वायर, क्योंकि कोई क्वेश्चन में गिवन है, हाँ जी। तो नाउ कैन आई राइट दिस इज प्रोपोर्शनल टू, अब सुनना, 5 इंटू I, यही होता है ना टॉर्क, बताया था ना 2 इक्वेशन उसमें से, हाँ जी।
तो फ्लक्स के लिए तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल, हाँ जी, तो कैन आई राइट IA2/2, फ्लक्स के जगह पे ये लिखोगे, हाँ जी, और IA तो IA2 है ही, बस यही कॉन्सेप्ट होता है इसमें। फिर से रिपीट करता हूं, सुनना, फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ये करंट है, दैट इज वाई एट द प्लेस ऑफ फ्लक्स आई हैव रिटेन IA2/2, और करंट जो है वो तो है ही। अच्छा सर, तो क्या रिलेशन आया यहां से बताओ, दैट N2 इज प्रोपोर्शनल टू IA या IA2/√2, क्लियर? हाँ जी सर, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, तो यानी कि 2 इक्वेशन आपके सामने आ चुका है। तो अब यहां से बताओ तो N1/N2 कितना लिखूं, हाउ मच, बोलो, N1/N2 इज इक्वल टू हाउ मच, IA1/IA2/√2, यही आएगा, हाँ जी बिल्कुल। मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 3 कुछ नाम दे दो, राइट? तो ये रिलेशन यहां पे आ चुका है एक। ये रिलेशन कहां से लाया मैं, टॉर्क और करंट का जो रिलेशन था उससे लाया। एक और रिलेशन क्या पता होता है हमें, EB प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू ओमेगा, राइट? तो चलो जी वो भी देखते हैं, और फिर दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आएगा, ठीक है? चलो तो देखो, अच्छा एक चीज और, निगलेक्टिंग लॉसेस वगैरह कभी लिखा हो ना, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, V ऑलमोस्ट इक्वल टू EB। जब कभी निगलेक्टिंग लॉसेस या ये सब लिखा हो तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सर EB1 इज इक्वल टू EB2 इज इक्वल टू V, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा, हाँ जी। अच्छा, EB प्रोपोर्शनल टू क्या होता है सर, फाई इंटू N, अभी बताया था आपने, बिल्कुल। तो नाउ टेल मी, कैन आई राइट φ1N1 इज इक्वल टू φ2N2, हाँ सर ऑफ कोर्स। अच्छा, φ1 के जगह कितना लिखूं सर, IA1 लिखोगे सर, क्योंकि पूरा करंट फ्लो हो रहा था, क्योंकि सारे सीरीज में थे। φ2 के जगह कितना लिखूं सर, IA2/2 लिखोगे सर। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो नाउ टेल मी फ्रॉम हियर व्हाट इज N1/N2 रेशियो, कितना आया, तो सर यहां से N1/N2 रेशियो जो आता है वो 0.5 IA2/IA1, कुछ यूं आया, हाँ जी। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट कर दें तो रिलेशन आ जाएगा, राइट सर। चलो जी देखते हैं, तो फ्रॉम 3 and 4 क्या लिखूं, IA1 अपॉन IA2/√2 दैट इज इक्वल टू 0.5 IA2/IA1, ठीक है? इनको इक्वेट कर दिया, बिकॉज N1N2 रेशियो। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल गिव यू रिलेशन बिटवीन IA2 एंड IA1, तो कितना आ जाएगा, 2√2 IA1 का स्क्वायर, IA1 इज गिवन, रख दोगे तो IA2 आ जाएगा। अच्छा सर, ओके फाइन। सो IA2 इज इक्वल टू 2√2 इंटू IA1 कितना है, 20 ना, 20 का स्क्वायर, कितना आ गया, 33.64 एम्पियर, ठीक है? तो ये पार्ट हो गया IA2 वाला, हाँ जी सर बिल्कुल हो गया। अब स्पीड की बात है तो किसी भी इक्वेशन में रख दो। अच्छा सर, तो स्पीड के लिए व्हाट इज दैट, N2/N1 इज इक्वल टू हाउ मच, 2IA1/IA2 ना, तो यहां से कैन आई राइट 2 इंटू 20/33.64, how much it is, 1.19. So from here what is your N2? N2 is 1.19 into 600, कितना आया, 714 RPM, ठीक है? तो अगर आप प्रॉपर मैनर में जाते हो तो इतना लिख करके ये लाना पड़ेगा, और जो मैंने बताया उससे आपको 30-40 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस के वो जो छोटे वाले मेथड होते हैं वो आना चाहिए, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा वहां एज मिल जाता है आपको बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर, राइट? चलो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना, ओके फाइन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए सभी लोग। हाँ राइट लक्ष्मण, बहुत अच्छा, यस राइट रीना, करेक्ट।
अच्छा, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं मैं एक मंथ में अभी कंसिस्टेंट नहीं रहा, फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। कोई टेंशन मत लेना भाई, ठीक है। किसी को भी लग रहा हो तैयारी नहीं हुई, मैं कुछ नहीं पढ़ पाया वगैरह वगैरह, कोई टेंशन मत लो। अभी भी जितने दिन हैं 2 फुल सिलेबस टेस्ट डेली दो और उन्हीं टेस्ट का रिव्यू करो, ठीक है, करेक्ट। अभी भी जितने दिन हैं उतने दिन करके देखो, ट्रैक पे आ जाओगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा क्या रिजल्ट होगा, वो तो अब आपका नॉलेज, आपका मेहनत और फाइनली आपका लक, लेकिन जो कॉन्फिडेंस वाला पार्ट है ना वो आ जाएगा, करके देखिए आप, ठीक है। 2 फुल सिलेबस टेस्ट डेली देना और हाँ 1 टेस्ट, करेक्ट, जो टाइम है टेस्ट का उस टाइम में जरूर देना, राइट। और कोशिश करना थोड़ा डे टाइम वाला जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको ठीक करने का। अगर तुम रात में पढ़ रहे होगे तो धीरे धीरे अब चेंज करो, दिन वाला शुरू करो, क्योंकि जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उस हिसाब से हमारी एफिशिएंसी होती है, ठीक है ना, क्लियर है। तो थोड़ा सा अभी अब उसको ठीक करने लग जाओ, क्योंकि धीरे धीरे एग्जाम नज़दीक आ रहा है, राइट। और खूब सारा पानी पियो, अच्छा खाना खाओ, ठीक है, थोड़ा सनलाइट वगैरह लो, उससे एनर्जी और कॉन्फिडेंस आता है, राइट। और घबराओ नहीं, क्योंकि इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी है, याद रखना। अगर कुछ भी नहीं बन पाए तो क्या पता रेलवे मिनिस्टर बन जाओ भाई, ठीक है। तो इसीलिए टेंशन मत लो, क्लियर है ना। बस मेहनत लेकिन जरूर करो, क्योंकि मेहनत करने वाला ही वहां भी पहुंचता है, राइट। चलो, अब ए डीसी सीरीज मोटर हैविंग आर्मेचर एंड फील्ड रेसिस्टेंस ऑफ 0.3 ओम एंड 0.1 ओम रिस्पेक्टिवली हैज आर्मेचर करंट दिया हुआ है, लोड टॉर्क। The motor is rated at 120 volt. Assume linear magnetizing characteristics. What will be the resultant speed at steady state condition for the following cases? If the load torque remaining constant and the series field resistance is increased to 0.4 ohm. तो देखो फिर से क्वेश्चन क्या दिया, the load torque remains constant, यानी कि पहले वाले केस में अगर हम देखें, ठीक है। पहले आप मुझे ये बताओ, जनरल इक्वेशन आपको क्या पता है सर? EB इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एंड टॉर्क इज इक्वल टू के फाई IA, राइट। अब बताओ सीरीज मोटर है? हाँ सर सीरीज मोटर है। तो अब आ जाओ, सीरीज मोटर यानी फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू IA, करेक्ट। तो व्हाट कैन आई राइट? टॉर्क प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ, पहले पार्ट में बोल रहा है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये जनरल बात थी जो आपको दिमाग में आ गया, ये तो जनरल है और ये सीरीज मोटर है इसलिए हमने लिख लिया, ओके फाइन। तो नाउ आ जाओ, लोड टॉर्क इज कांस्टेंट, करेक्ट। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है? लोड टॉर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, अभी अभी बताया, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर, क्योंकि क्या है ये सीरीज मोटर है। अच्छा, अब बताओ टॉर्क प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर और टॉर्क कांस्टेंट है, तो क्या मैं लिख सकता हूं करंट भी कांस्टेंट होगा? मतलब कैन आई राइट IA1 स्क्वायर इज इक्वल टू IA2 स्क्वायर? हाँ जी, तो IA1 इज इक्वल टू IA2। तो देखो भाई, जैसे ये कुछ कंडीशंस दिए रहेंगे ना कि अगर ऐसा है, तो अगर ऐसा है मतलब उससे जो रिलेशन आ रहा है वो लिख लो। अब पूछेगा अब क्या होगा, तो उसी को उसमें यूज कर दो, यही तो होता है सब क्वेश्चन में, ठीक। अब आपको लग रहा होगा नहीं सर आपने सॉल्व कर रखा है या, अरे तो तुम भी कर लो सॉल्व, 2-4 क्वेश्चन कर लो उसी टॉपिक पे, हो गया, ठीक है। चलो जी, ये रिलेशन आ गया हमारा। अब आ जाइए EB वाला रिलेशन, EB प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एन, करेक्ट। अब फाई प्रोपोर्शनल टू IA, हाँ जी, तो कैन आई राइट EB प्रोपोर्शनल टू IA इंटू एन? हाँ सर ऑफ कोर्स, चलो जी लिख लेते हैं। अब देखो करंट कांस्टेंट है, करंट इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो कैन आई राइट EB प्रोपोर्शनल टू एन? हाँ सर, क्योंकि करंट तो चेंज हो नहीं रहा तो वैसे ही कांस्टेंट रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू प्ले एनी रोल। अब बस जब ये हो गया तो अब देखो कितना आसान है। मतलब क्या है, जो जो क्वेश्चन में कहा गया है बस वही लिखते चले जाओ, और जो 1-2 चीजें आपको पता है वो लिख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ये प्रैक्टिस की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये सब करने में आप थोड़े फास्ट बन जाओगे, एक्यूरेट बन जाओगे, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट इतने ही होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते। सर बहुत टफ आ गया, तो कई बच्चे इसलिए डरते हैं, बहुत टफ आ गया, अरे छोड़ देना, वो किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत टफ के पीछे मत पड़ो, जो 90% चीजें, 95% चीजें हैं उनको जरूर अच्छा करके जाओ। चलो जी, अब देखते हैं, तो कैन आई राइट हियर, देखो तो
EB2 बाई EB1 इज इक्वल टू N2 बाई N1, ठीक है। N2 इज इक्वल टू EB2 बाई EB1 इंटू N1, राइट। तो अब जरा ये वैल्यू वगैरह लिख लें। हाँ जी सर, 120 माइनस 78 इंटू 0.3 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 78 इंटू 0.3 प्लस 0.4 इंटू कितना है 750। हाँ जी, तो यहाँ से देखो तो N2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 552 RPM आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग भी चेक कर लेना, देख लेना। बी पार्ट में आ जाओ, ठीक है। इफ द लोड इज चेंज्ड सो दैट द रिजल्टिंग करंट इज 50 एम्पियर। अब बोल रहा है कि हम चेंज कर दिए हैं 50 एम्पियर, तो ठीक है जी। अब IA3 नाम दे देते हैं इसको, 50 एम्पियर हो गया। हाँ जी, तो व्हाट इज EB3? सर EB3 इज इक्वल टू 120 माइनस 50 इंटू 0.3 प्लस 0.1, ठीक है। तो यहां से EB3 आ जाएगा। तो व्हाट इज N3? वही रिलेशन N2 बाय N1 दिस बाय दिस। हाँ, तो रिलेशन तो वही यूज होगा, बस करंट यहां पे चेंज हो रहा है, वहां पे रेसिस्टेंस चेंज हो रहा था। तो व्हाट आई कैन राइट, सर EB3 इंटू I1 अपॉन EB1 इंटू I3, करेक्ट, इंटू N1। तो कितना आ रहा है, सारा वैल्यू रख दोगे, 100 इंटू 78 अपॉन 88.8 इंटू 50 इंटू 750, कितना आ गया ये 1318 RPM, ठीक है। चलो लिख लो। ओके फाइन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मैंने कोशिश ये किया है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन चूज करूं जिसमें लैंग्वेज भी थोड़ा ट्विस्टेड हो, आपको पढ़ के ना थोड़ा अजीब लगे, ठीक है। ये है, ये कॉन्सेप्ट वही होंगे, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे, थोड़ा पढ़ करके थोड़ा सा आपको लगेगा अरे ये क्या पूछ दिया, जैसे गेट में होता है ना, ठीक है, वो भी ध्यान रखा है। तो सॉल्यूशन फटाफट होंगे, बट थोड़ा लैंग्वेज आपको अजीब सा लगेगा। A DC shunt generator is to be converted into a label compound generator by the addition of a series field winding। तो DC shunt generator तो आप जानते ही हो, हाँ जी। उसमें चाह रहे हैं हम कुछ टर्न्स और सीरीज में भी ऐड कर दें जिससे कि वो कंपाउंड जनरेटर बन जाए, ठीक है। कंपाउंड जनरेटर बन जाएगा तो क्या होगा, तो जो ड्रॉप है यानी वोल्टेज सेम मिलेगा हमें, हाँ जी। जो आर्मेचर रिएक्शन और ड्रॉप की वोल्टेज हो जाती है ना, वो कवर कर देता है वो सीरीज फील्ड, क्लास में पढ़ा आपने, ठीक है। तो अब वो हमें करना है, तो बताना है कि कितना टर्न्स डालें, राइट, वही क्वेश्चन में है। इट इज फाउंड दैट द शंट फील्ड करंट आर दिस मच on no load and this much to give the same voltage when the machine is supplying its full load of 200 ampere. The shunt winding has 1200 turns per pole. Find the number of series turns required per pole. कितने टर्न्स सीरीज में डालें, समझ में आ गया। अच्छा, तो चलो पहले ये पता कर लें कि पहली वाली कंडीशन क्या थी। हाँ सर, फिर हम देखेंगे कि अच्छा अब हमें ये चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दो ही बात होंगी। हाँ जी, चलो। तो एट नो लोड बताओ शंट फील्ड MMF कितना हो जाएगा, दैट इज 1200 इंटू करंट कितना है 3.1, राइट। तो कितना है ये 3720 एम्पियर टर्न। अच्छा, अब बताओ एट फुल लोड व्हाट इज शंट फील्ड MMF? शंट फील्ड MMF, तो दैट इज इक्वल टू 1200 इंटू 4.8, 5760 एम्पियर टर्न, ठीक बात। अच्छा, तो ये वैल्यू हमने निकाल लिया, ओके फाइन। तो अब मुझे ये बताओ, यानी कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग से आपको कितना MMF चाहिए? तो सर सीधी सी बात है, राइट, ये जो गैप है यही तो फिल करना है। अच्छा जी, तो MMF टू बी सप्लाइड by series field winding, correct, is 5760 minus 3720, right।
2040 एम्पियर टर्न, करेक्ट। अब ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, राइट, इसमें करंट कौन सा फ्लो होगा? तो सर आर्मेचर करंट ही नॉर्मली फ्लो होगा। मान लीजिए अगर नहीं गिवन है, हम मान लेते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड लेवल कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग शंट, तो वही फ्लो आर्मेचर करंट फ्लो होगा। हाँ जी, तो आर्मेचर करंट जरा बताओ फुल लोड पे कितना होगा? तो दैट इज योर आई लोड प्लस आई शंट, ठीक है, क्योंकि जनरेटर से जो आर्मेचर करंट निकला है वही शंट में भी जाता है, लोड के पास भी जाता है। हाँ जी, तो हाउ मच? 200 प्लस 4.8, 204.8 एम्पियर, ठीक बात। हाँ जी, तो बस अब वो जितना चाहिए एमएमएफ उसको इस करंट से डिवाइड कर देंगे तो टर्न्स निकल के आ जाएगा, ठीक। आप कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, तो वही तो बता रहा हूं, कई क्वेश्चन सिंपल भी आएंगे, कई टफ भी आएंगे, थोड़ा ट्विस्टेड आएंगे, यही तो होता है, ठीक है। तो चलो जी, नंबर ऑफ सीरीज फील्ड टर्न इज इक्वल टू एमएमएफ डिवाइडेड बाय करंट, कितना आया? अप्रोक्सीमेटली 10 लिख देता हूं, 9.96 आएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट आ जाइए। ए 2 पोल डीसी शंट जनरेटर चार्जेस ए 100 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है, ये रहा आपका बैटरी जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं दिया है, इसको चार्ज कर रहा है वो, ठीक है। द आर्मेचर ऑफ द मशीन इज मेड अप ऑफ 1000 कंडक्टर्स ईच ऑफ 2 मिली ओम रेसिस्टेंस। अच्छा, द चार्जिंग करंट आर फाउंड टू बी दिस मच एंड दिस मच फॉर जनरेटर स्पीड ऑफ दिस मच, अलग अलग स्पीड पे दो करंट दिया है। फाइंड द शंट फील्ड सर्किट रेसिस्टेंस, बताइए वो जो शंट जनरेटर है उसके शंट फील्ड का रेसिस्टेंस कितना होगा। एंड द फ्लक्स पर पोल ऑफ द जनरेटर, और फ्लक्स भी बताइए पर पोल कितना होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा इसलिए थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, जो नॉर्मल हम ये टॉर्क स्पीड ये वो करते रहते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, लैंग्वेज। तो चलो देखते हैं। पहली बात ये बताओ, why these values are given? आर्मेचर ऑफ मशीन हैज इतना कंडक्टर ईच ऑफ दिस मच रेसिस्टेंस, ये इसलिए गिवन है ताकि हमें आर्मेचर सर्किट के बारे में थोड़ा आइडिया लगे, बिकॉज हियर आर्मेचर रेसिस्टेंसेज आर नॉट गिवन, करेक्ट, और फील्ड सर्किट का रेसिस्टेंस दे आर आस्किंग आल्सो, राइट। तो चलो जी शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ये बताओ पोल कितने हैं इसमें? सर 2 पोल हैं सर, तो 2 पोल हैं तो पैरेलल पाथ कितने होंगे? तो सर लैप कनेक्टेड ये वो कुछ लिखा नहीं, अरे फर्क क्या पड़ता है, जब 2 है तो 2 ही होगा, क्योंकि या तो A इक्वल टू P होता है या A इक्वल टू 2 होता है। अच्छा, तो यानी कि पैरेलल पाथ भी 2 ही हो जाएगा। तो चलो मुझे ये बताओ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ कितना होगा? टोटल कितने हैं? 1000 डिवाइडेड बाई 2, सर 500 कंडक्टर पर पैरेलल पाथ। एक का रेसिस्टेंस 2 मिली ओम, तो यानी कि रेसिस्टेंस पर पाथ कितना? सर 500 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक बात। अच्छा, तो टोटल रेसिस्टेंस आर्मेचर रेसिस्टेंस, तो सर 2 पाथ हैं, एक पाथ का पता है तो पैरेलल में डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। अच्छा, ठीक बात। तो कितना आया? दैट 500 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है? हाउ मच इट इज? 1/2 ओम, राइट। अच्छा, क्योंकि 2 पाथ है ना, पैरेलल में हो 2 पाथ हो तो सीधे बाई 2 कर दो। अच्छा, ये पार्ट हो गया, हमने आर्मेचर रेसिस्टेंस पता कर लिया। अब देखो इन क्वेश्चन 2 कंडीशंस आर गिवन। जब N1 मान लीजिए कितना स्पीड है 1055 आरपीएम, तो बोल रहा है कि दिस इज द करंट, तो Eg1 निकाल ले उस केस में 100 प्लस मान लीजिए 10 एम्पियर करंट है, IF1 है दैट वी डोंट नो, इंटू 0.5, ठीक बात, मतलब V प्लस IARA लिखा है। अच्छा सर यहां का वोल्टेज आपने कितना लिया? अरे 100 वोल्ट बैटरी है तो 100 वोल्ट तो यहां मेंटेन हो रहा होगा ना। अरे हाँ ठीक है सर, तो V प्लस IA इंटू RA, इसमें नया क्या है? हाँ सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ एट N2 इज इक्वल टू 1105 आरपीएम, तो फिर से बताओ Eg2 कितना होगा? सर 100 प्लस
कितना है करंट उस कंडीशन में 20 ना, 20 प्लस फील्ड करंट इनटू ये तो 0.5 ही रहेगा, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, राइट। ये बात भी यहां से लिख लिया। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, राइट। जो जो क्वेश्चन में दिया है अभी मैंने बस उसका यूज किया, मैंने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, बस क्वेश्चन में ये दिया था हमने लिख दिया। अब दिमाग कैसे लगाएंगे, क्योंकि दीज टू इक्वेशन हियर गिवन ना, हाँ जी, तो अब इनको सॉल्व कैसे करें, अननोन ज्यादा है ना, देखो। तो अगर हम इनके लिए कोई रिलेशन ले आए तो सर E इक्वल टू के बाई ओमेगा, राइट, तो बस उसको यूज कर दो। चलो जी लिख दें, यहां लिख देता हूं Eg प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एन, राइट। तो कितना हो जाएगा, अब फाई तो कांस्टेंट है सर, फाई कांस्टेंट कैसे, अरे शंट मशीन है और टर्मिनल वोल्टेज 100 वोल्ट है। अच्छा सर, तो क्या हो जाएगा Eg प्रोपोर्शनल टू एन, अच्छा तो कैन आई राइट Eg1 बाई Eg2 इज इक्वल टू N1 बाई N2, हाँ सर ऑफ कोर्स। चलो Eg1 क्या होगा सर, 100 प्लस वो जो लिखा है वहां पे 100 प्लस 10 प्लस IF1 इंटू हाउ मच 0.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस कितना है 20 प्लस ये IF1 ये IF फील्ड करंट, तो ठीक है सेम ही रहेगा, वोल्टेज और वो सेम है ना, इंटू 0.5 and that ratio this Eg1 by Eg2 I have written from there is equal to N1 by N2, कितना है 1055 अपॉन कितना 1105। अब इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमें यहां से फील्ड करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक बात। अच्छा तो बताओ व्हाट इज योर फील्ड करंट 1 एम्पियर सर। अच्छा तो फील्ड करंट आ गया, तो आर फील्ड करंट कितना होगा RF, यहां पे मान लो फील्ड रेसिस्टेंस रहा होगा 1 मिनट के लिए मान लो, राइट। तो क्या होगा वोल्टेज करेक्ट बाय करंट, ये करंट आ गया ना हाउ मच 1 एम्पियर, तो वोल्टेज बाय करंट तो रेसिस्टेंस आ गया 100 बाय 1, ठीक है। चलो जी ये पार्ट तो हो गया। अब मान लीजिए फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लक्स कहां से आएगा सर, अरे फ्लक्स कहां से आएगा, ये सब आ गया इसमें रख देंगे तो Eg आ जाएगा, और Eg क्या होता है 5PNZ बाई 60 है, सारी वैल्यू रख देंगे। अच्छा सर, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछने के चांसेस होते हैं, जहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के ना आपको सोचना पड़ता है कि ये कहना क्या चाह रहा है, कैसे एप्लीकेशन काइंड ऑफ एप्लीकेशन हो गया ना, तो इसीलिए। चलो जी, तो Eg1 मान लो उसमें मैं रख देता हूं 1 वाले में कितना 100 इंटू 100 प्लस 10 प्लस 1 इंटू 0.5, हाउ मच इट इज 105.5, ठीक है। और यही इक्वल टू लिख दो 5PNZ बाई 60A, बस इक्वेट कर दीजिए, हो गया। यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यू गिवन है, A इक्वल टू P इक्वल टू 2 हो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, स्पीड दिया है, नंबर ऑफ कंडक्टर दिया है, तो फ्लक्स कितना आएगा 6 मिली वेबर। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जब फ्लक्स वगैरह कभी निकालो तो फ्लक्स की वैल्यू वेबर में अगर है तो बहुत छोटी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि 10 टू द पावर -8 लाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 वेबर होता है। 10 टू द पावर 8 -8 गलती से बोल दिया, 10 टू द पावर 8, समझ रहे हो कितना हो जाता है, इतने लाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में जब पास करते हैं मैग्नेटिक लाइन्स, उसको 1 वेबर बोलते हैं, राइट। तो वेबर ऐसा यूनिट होता है, CGS यूनिट वो होता है जो मैंने अभी बोला, तो इसलिए ये वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, ऐसे 0.06 0.006 ऐसे। मान लो फ्लक्स तुम्हारा 60 वेबर आ गया तो समझ जाना कहीं गलती है, ठीक है। चलो ये पार्ट भी ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे बढ़े। A 2-pole lap-wound DC shunt motor with 360 conductors operates at a constant flux level of 50 milliweber. Okay. The motor armature has a resistance of this much, designed to operate at 240 volt, taking a current of 60 ampere at full load. देखो तो ये क्या है, हर क्वेश्चन में पहले कुछ दिया रहेगा, ये ऐसा है।
ओ जी अब अगर ऐसा है तो बताइए क्या होगा, ऐसा है तो बताइए क्या होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, बस इतनी सी बात होती है। चलो जी, तो क्या पूछ रहे हैं जरा देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू बी इंस्टर्टेड इन द आर्मेचर सर्किट सो दैट द आर्मेचर करंट डज नॉट एक्सीड ट्वाइस ऑफ इट्स फुल लोड वैल्यू एट स्टार्टिंग। एट स्टार्टिंग, ये देखो एट स्टार्टिंग का मतलब यहां क्या है, स्पीड जीरो होगी, स्पीड जीरो होगी, इसका मतलब ईबी प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू एन, ईबी जीरो होगा। अच्छा सर, तो यानी कि कह रहा है ए पार्ट में कि ये बताइए कितना रेसिस्टेंस हम इंसर्ट कर दें, स्टार्टर वगैरह यूज करते हैं ना, स्टार्टिंग में क्या होता है, एक चीज समझना, करंट क्या होता है, तो सर V माइनस ई बी बाई आर ए, तो स्टार्टिंग में अगर एन जीरो होगा तो ई बी जीरो, हाँ जी, तो पूरा का पूरा वोल्टेज आर्मेचर रेसिस्टेंस के क्रॉस आएगा, हाँ जी, तो आर्मेचर रेसिस्टेंस जल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ रेसिस्टेंस हम एक्स्ट्रा उस पाथ में लगा देते हैं थ्रू स्टार्टर, ताकि स्टार्टिंग में इस करंट को वो लिमिट कर सके। तो वाई स्टार्टर इज यूज्ड टू लिमिट द ह्यूज वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग करंट। तो इन क्वेश्चन इट इज गिवन कि देखो भाई, जो करंट है ना स्टार्टिंग करंट, इट शुड नॉट एक्सीड ट्वाइस इट्स फुल लोड वैल्यू, तो फुल लोड से के 2 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी टेक्निकली आपको स्टार्टिंग करंट की वैल्यू उसने दे दिया। सर कितना, चलो देखो, तो कैन आई राइट IA2 is equal to, that is the maximum current which is 2 times IA1। IA1 कितना, 60 एम्पियर है ना, तो 2 इंटू 60 120 एम्पियर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो एडिशनल रेसिस्टेंस, ठीक है जी, तो EB2 क्या लिखोगे, 240 माइनस 120 करंट है इंटू जो भी 0.12 तो पहले से है इंटू आर एक्सटर्नल, राइट। तो यहां से आर एक्सटर्नल हाउ मच यू आर गेटिंग, 1.88 ओम, आंसर, ठीक है। अरे सर हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया, इतनी सी बात थी। अच्छा चलो बी पार्ट आ जाते हैं। द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज कंप्लीटली कट आउट। अब हो सकता है मोटर स्टार्ट हो गया, अब हमें उस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की जरूरत नहीं है। सर क्यों जरूरत नहीं है, अरे फालतू लॉस होगा ना अगर वो रहेगा, क्योंकि उसके थ्रू करंट जाएगा। अच्छा तो उसको हटा दो, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो नाउ सी, उसको हटा देंगे, तो अब बताओ तो EB क्या लिखूं, 240 माइनस 60 इंटू 0.12 कितना, 232.8 वोल्ट, ठीक है। When the motor reaches its final speed with the armature current at the full load value, calculate the motor speed under this condition। तो EB आ गया, हाँ जी सर ठीक है। अब EB इक्वल टू क्या होता है, 5PNZ बाई 60, ये सारा वैल्यू रख दो। अच्छा सर, तो यहाँ से स्पीड कितना आ जाएगा, 776 RPM, ठीक है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा स्टार्टिंग का टच दिया है इस क्वेश्चन में, कि स्टार्टिंग में रेसिस्टेंस ऐड करके और फिर जब स्टार्ट हो जाता है मोटर, फिर हम उस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को यानी स्टार्टर को हटा देते हैं, ठीक है, ताकि वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। चलो जी लिख लीजिए। सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है सर। हाँ हाँ आसान है, अब थोड़ा सा एक बढ़िया भी दूंगा ना, ठीक है, क्योंकि गेट भी तो यही करता है, थोड़ा आसान भी देगा, थोड़ा सा मुश्किल भी देगा, राइट। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन अगेन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई बच्चे फंसते हैं, परेशान होते हैं, इसीलिए मैंने इसको रखा है, ठीक है। 2 आइडेंटिकल 15 किलोवाट दिस मच वोल्ट डीसी सीरीज मोटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 240 वोल्ट डीसी सप्लाई। चलो जी पिक्चर भी बना देता हूं। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल मोटर को हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। कितने वोल्टेज से, कितना दे रखा है, हाउ मच, 250 वोल्ट, ठीक है। अच्छा तो यानी कि कुछ मान लो करंट ऐसा गया होगा, ये सीरीज आई सीरीज 2 या कुछ ऐसे नाम दे दो, बट ठीक है, ओके फाइन, और प्लस माइनस ऐसे सीरीज में होते हुए फिर करंट ऐसे वापस, ठीक है। द ड्राइव द सेम शाफ्ट थ्रू रिडक्शन गियरिंग 3:1 4:1। सर ये क्या दे दिया, अरे कुछ भी नहीं है, देखो घबराना नहीं, ठीक है। देखो
मान लो जो भी इसका साफ्ट वाफ्ट होगा ना, राइट, तो उससे एक गियर लगा हुआ है जो कि स्पीड को क्या, गियर तो जानते ही हो स्पीड को क्या करता है, जिस रेशियो में आपको चाहिए उस रेशियो में कम या ज्यादा करेगा, ठीक है। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर पता तो है ही। अच्छा, तो मान लीजिए सपोज 1 मिनट के लिए कि इसका कुछ शाफ्ट रहा होगा, हाँ जी, और सिमिलरली इसका भी शाफ्ट रहा होगा, हाँ जी। अब दोनों ये जो गियर हैं फाइनली कॉमन स्पीड एक चल रहा है, हाँ जी, क्योंकि सेम लोड को चला रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो चलो जी दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपका शाफ्ट की स्पीड मान लो कुछ NSH लिख देता हूं या N शाफ्ट लिख दो, शॉर्ट में NSH लिखेंगे, कॉमन स्पीड, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं गियर, 3:1 में स्पीड को, ये 3:1 है और यहां पे 4:1 है, उससे स्पीड को क्या कर दे रहे हैं, है ना, कॉमन एक स्पीड पे ले आ रहे हैं, ठीक है, ये गिवन है। अच्छा ठीक है सर, डन है। अब कैलकुलेट द स्पीड, अच्छा, इफ द टोटल टॉर्क शाफ्ट का दिया हुआ है दैट इज 630 न्यूटन मीटर, मतलब दोनों मिलके जो टॉर्क लगा रहे हैं उनका सम कितना है, 630 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द शाफ्ट, अब बताइए शाफ्ट की स्पीड कितनी होगी, एंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच मोटर, ये मान लो सपोज यहां पे कुछ इस वोल्टेज का नाम मैं EB1 दे देता हूं और इसके क्रॉस EB2 दे देता हूं, तो ये वोल्टेज पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, एंड द करंट फ्रॉम द सप्लाई, करंट कितना ले रहा है, नेग्लेक्ट लॉसेज एंड एज्यूम द मैग्नेटिक सर्किट टू बी अनसैचुरेटेड। ये जब भी लिखा हो मैग्नेटिक सर्किट टू बी अनसैचुरेटेड मतलब फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट, वो वाली बात, ठीक है। एंड निग्लेक्ट लॉसेज जब लिखा हो तो उस केस में कई बार हम वोल्टेज को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक बात है। क्वेश्चन लिख लिया, डायग्राम बना लिया, ओके फाइन, यस सर, आगे बढ़े, दिस इज द क्वेश्चन, डायग्राम रहने देते हैं ऐसे, ठीक है। चलो जी, अब आप ये बताओ मुझे कि यहां पे सबसे पहले नेग्लेक्ट लॉसेस जब दिया रहता है, मैंने बताया ना V ऑलमोस्ट इक्वल टू EB लेकर के, और क्या लिखें, मान लो K डैश फाई इंटू ओमेगा लिखता हूं, और क्योंकि सीरीज मशीन है तो फाई प्रोपोर्शनल टू IA, हाँ जी सर, तो EB इज इक्वल टू KI ओमेगा लिख दूं, फाई प्रोपोर्शनल टू IA, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो K डैश यहां नाम दिया, यहां K नाम दे दिया, चलेगा ना, कांस्टेंट चेंज होता है, तो फाइनली ये मैंने हमारे नोटेशन में मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा सर, ठीक बात, तो यहां से बताओ मुझे K की वैल्यू कितनी होगी, तो सर पहले EB तो कैलकुलेट कर लीजिए, राइट, तो EB तो हमारा पता ही है कितना, 250, क्योंकि V के बराबर है, हाँ जी, तो 250 अपॉन IA इंटू ओमेगा, 60 इंटू ओमेगा कितना है, N 1000 RPM है ना, हाँ जी, तो ओमेगा निकाल लें, 2 पाई इंटू 1000, 2 पाई N बाई 60, कितना आया, 104.72 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, और करंट, तो करंट सर हो जाएगा, निकाल देता हूँ, 15,000 डिवाइडेड बाय 250, 60 एम्पियर आता है ये, ठीक है। चलो जी रख दें यहाँ पे 60 इंटू 104.72, तो कितना आ गया ये, दिस इज 0.0398, ठीक है। ये आपकी K की वैल्यू आ गई, आप यूनिट भी लिख सकते हो, दिस इज वोल्टेज, और ये नीचे क्या है, दैट इज रेडियन पर सेकेंड, तो ऐसे करके, बट नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। बस याद रखना IA इंटू ओमेगा जब हम लिखेंगे तो वहां जो कांस्टेंट लिखेंगे उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जैसे दोनों मशीन है, हाँ जी दोनों मशीन है, तो अगर हम मशीन, इसका नाम कुछ A दे देते हैं, इसका नाम कुछ B दे देते हैं, ठीक है, तो NA और NB को यूज करते हैं, यही लिख दूं ताकि डायग्राम भी सामने रहेगा, हाँ जी। तो चलिए जरा मोटर A की बात करते हैं, राइट, तो व्हाट इज NA, तो NA इज इक्वल टू, देखो तो अगर N शाफ्ट NSH है तो 1:1 उधर 3 है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, हाँ जी सर, तो यानी 3 टाइम्स NSH लिख दूं क्योंकि ये रेशियो 3:1 का है। अच्छा, और मोटर B में क्या होगा, तो सर NB है, तो NB कितना हो जाएगा, 4 इंटू NSH हो जाएगा, यस सर ऑफ कोर्स। चलो जी, अब ये चीज हमने यहां से रख लिया,
ये जो डेटा दिया था वहां से रख लिया और k की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया। अभी तक हमने इतना किया है, ठीक है। अब जो मशीन का कॉन्सेप्ट होता है वो लगाएंगे। अब बताओ तो एक और रह गया हमारा टॉर्क का रिलेशन। सो आई एम गोइंग टू यूज दैट टॉर्क रिलेशन। ओके, चलो जी। तो टॉर्क क्या कहता है अगेन, टॉर्क इज इक्वल टू, मान लो k डैश बोल देता हूं फिर से इसको मैं, k फाई आई ए, फाई प्रोपोर्शनल टू आई ए। तो कैन आई राइट टॉर्क इज इक्वल टू k आई ए के जगह आई ए लिख दूं फाई के जगह, तो k आई ए स्क्वायर, बिकॉज वी नो दिस k, ठीक है। हाँ जी, तो यहां से देखो तो ए मशीन का टॉर्क क्या लिखूं, तो सर ए मशीन के टॉर्क में जो शाफ्ट टॉर्क की बात हो रही है, राइट, तो कितना आ जाएगा ये, गियर से अगर हम रिलेट करें तो 3 इंटू के इंटू आई ए स्क्वायर, और शाफ्ट इसको बोलते क्या है जरा समझना, शाफ्ट टॉर्क की बात हो रही है ऑफ मोटर ए, ठीक है, थ्रू गियर, क्योंकि गियर उसको क्या करेगा 3 टाइम्स कर देगा, राइट, 3:1 है ना। अच्छा, और सिमिलरली टी बी कितना होगा शाफ्ट टॉर्क, तो 4 टाइम्स, हाँ जी, तो 4k इंटू आई ए स्क्वायर, राइट। चलो जी, ये दो रिलेशन भी हमने यूज कर लिया। हाँ जी सर, बिल्कुल। अब जब दोनों यूज कर लिया तो बताओ दोनों का सम कितना है, टोटल टॉर्क बोल रखा है इतना है, हाँ जी, तो हाउ मच टोटल टॉर्क इज, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नाउ सी व्हाट इज द टोटल टॉर्क, टोटल शाफ्ट टॉर्क, ठीक है, कितना होगा, मान लो T नाम दे देते हैं, तो TA इज इक्वल टू TA प्लस TB, और हाउ मच इट इज, दोनों का सम कर दोगे तो 3 + 4 इंटू के आई ए स्क्वायर, ठीक है, ये आई ए 2 में स्प्रिंट है, हाँ चलो, के आई ए स्क्वायर। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, 7 इंटू के की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, हाउ मच, 0.0398 इंटू आई ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है, टोटल टॉर्क गिवन है ना 630, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहां से फिर करंट आ जाएगा, हाउ मच, दिस आई ए इज 47.55 एम्पियर, ठीक है। चलो अब ये आ चुका है, हाँ जी, अब बोल रहा है वोल्टेज अक्रॉस दैट, हाँ जी, तो चलो देखते हैं टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, सिर्फ मोटर के अक्रॉस बोल रहा है, तो वोल्टेज इज इक्वल टू, मान लो ई बी ए और ई बी बी, बैक ईएमएफ दोनों का सम हो जाएगा ना, वही तो वोल्टेज होगा। तो क्या लिखूं, के आई वन इंटू ओमेगा ए प्लस के आई ए वन मीन्स एक ही करंट है, तो चिंता की बात नहीं है ना, आई ए इंटू ओमेगा बी, राइट। तो के आई ए कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा ए कितना है, वो रिलेशन हमने लिखा था 3 टाइम्स ओमेगा शाफ्ट, ये कितना था 4 टाइम्स ओमेगा शाफ्ट, तो हाउ मच इट इज, दैट इज दिस वोल्टेज इज 250, हाँ जी सर, बिकॉज द सम इज वोल्टेज है ना, तो इज इक्वल इंटू के आई ए कितना हो जाएगा, पूरा वैल्यू लिख दूं डायरेक्ट, 7 इंटू 0.039 इंटू 47.55 इंटू ओमेगा एस एच, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये 4 + 3 7 हो गया, के आई ए की वैल्यू रख दिया, तो यहाँ से ओमेगा एस एच कितना आ गया, हाउ मच, 18.87 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो दूसरा पार्ट भी हो गया, राइट, तो मतलब ओमेगा एस एच आ गया। अब ओमेगा एस एच आ गया तो वी नो ई बी ए इज दिस मच, तो ओमेगा एक 3 ओमेगा एस एच ये रख देंगे, के आई ए पता है तो ई बी ए आ जाएगा, सिमिलरली ई बी बी आ जाएगा, बिकॉज दे आर आस्किंग कि मोटर के अक्रॉस वोल्टेज बताइए कितना होगा। तो चलो जी, वोल्टेज अक्रॉस ईच मोटर, वोल्टेज अक्रॉस ईच मोटर, ठीक है, ई बी ए हाउ मच, के आई ए, व्हाट इज ओमेगा ए, 3 ओमेगा एस एच, अच्छा सब वैल्यू रख दो, निकाल चुके हैं, ये आएगा 107.14 वोल्ट, और ई बी बी, ठीक है, 0.0398 इंटू 47.55 इंटू 4 ओमेगा एस एच,
हाउ मच इट इज 142.85 वोल्ट। ठीक है, आंसर क्लियर है। क्योंकि जरा समझना, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज ड्राइविंग द सेम शाफ्ट। दोनों की देखो वोल्टेज अक्रॉस दोनों की अलग अलग है, करंट सेम है लेकिन स्पीड तो अलग अलग होगी ना दोनों की, एक 3SH है एक 4SH है, इसीलिए गियर से कनेक्ट किया कि फाइनली वो गियर क्या करेंगे, उसको एक कॉमन स्पीड पे चलाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी मोटर सीरीज में कनेक्टेड है ड्रॉइंग द सेम करंट, बट बोथ द मोटर आर ऑपरेटिंग एट डिफरेंट स्पीड, लेकिन गियर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसको एक कॉमन स्पीड पे शाफ्ट पे लेके आ रहे हैं। दैट ओमेगा SH इज हाउ मच 18.87 रेडियन पर सेकेंड। तो ये पूरी कहानी थी, इस क्वेश्चन की फिलॉसफी जो है वो यही है। चलो लिख लो, ठीक है। ओके फाइन। चलो पूछ रहे हैं डीसी मशीन में जो रेटेड पावर है, ठीक है, वो हमेशा आउटपुट पावर लेंगे क्या? देखो जनरली जो भी मशीन होता है, जनरली जो भी मशीन होगा, राइट, रेटिंग हमेशा आउटपुट ही होता है। ठीक है, बस एक जगह इनपुट होता है रेटिंग, हीटर में। क्यों? क्योंकि हीटर कितना पावर ड्रॉ करता है वो लिखा रहेगा ना, वो कितना हीटिंग कर रहा है वो थोड़े ना लिखेंगे। अच्छा, तो हीटर में इनपुट होता है रेटिंग, क्लियर है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल उस हिसाब से। अच्छा, बाकी सब जगह आउटपुट ही उसका रेटिंग होता है मोस्टली। लेकिन अब आप कंफ्यूज क्यों होते हो? क्योंकि डीसी मशीन में समटाइम्स व्हाट दे डू, इतना किलोवाट ऐसे कुछ लिख देगा, मोटर है वगैरह। अब इतना किलोवाट मोटर है तो कंफ्यूजन इज, सर आपने तो कहा था या हमें पता है कि आउटपुट इज द रेटिंग, बट मान लीजिए सपोज दे आर then framing the question like drawing this much current from supply lines वगैरह वगैरह, तो यानी कि उसको आउटपुट लेकर के सॉल्व नहीं होगा, वो इनपुट लेकर के सॉल्व होगा, बट इट इज नॉट स्पेशली मेंशन्ड कि वेदर दैट इज इनपुट और आउटपुट। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे? नहीं सर, तो वहां पे दिमाग लगाओगे कि अच्छा इसका मतलब इसको इनपुट लेने से ही सॉल्व होगा। समझ में आया? तो कई बार ऐसा होता है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के ना आप देखो कि कैसे, क्योंकि क्वेश्चन क्यों दिया है सर, सॉल्व करने के लिए दिया है। तभी तो फर्स्ट पेज पे व्हाट दे राइट, एज्यूम सुटेबल एजम्पशन व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, ताकि आप उन पे केस नहीं करोगे, लिटिगेशन में नहीं ले जाओगे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो फिर एक क्वेश्चन है, अगेन फॉर्मूला वही 2-3 वही लगते हैं, बट थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट है, दैट इज व्हाई आई हैव चूजन दिस क्वेश्चन। 2 डीसी कंपाउंड वॉन्ड है ना, जनरेटर्स हैं ए एंड बी, ऑपरेट इन पैरेलल विद देयर एक्साइटेशंस सच दैट देयर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मे बी टेकन एज स्ट्रेट लाइंस इन द वर्किंग रेंज आर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स यहां पे दिया हुआ है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ जनरेटर्स दिया हुआ है। नो लोड करंट, लोड करंट 0 है तो 270, जब लोड करंट 20 है तो 220। सिमिलरली इधर भी नो लोड पे जो बी मशीन है 280 है नो लोड वोल्टेज, और जब हमारा लोड करंट 20 है तो 240 है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है, राइट, आर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। फाइंड द लोड करंट्स ऑफ ईच मशीन व्हेन द लोड इज ए रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम, पहला केस है। दूसरे केस में कह रहे हैं बैटरी ऑफ 220 वोल्ट एंड द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 1.1 ओम। तो 2 केसेस हैं इसमें, ध्यान दो। अच्छा, ये मैंने क्यों रखा? क्योंकि ऐसे टेबल या कोई ग्राफ या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो जनरली आप घबरा जाते हैं, बट घबराइए मत, ठीक है, बहुत ही सिंपल होते हैं ये। तो मुझे ये बताओ, ये जो चेंज इन वोल्टेज है विद द लोड करंट, तो यहां से क्या आ जाएगा? तो यहां से एक्चुअली वो रेशियो आ जाएगा, ठीक है, V/I का। तो चलो, जैसे आई होप फोटो वगैरह ले लो, अगर अभी कर रहे होगे तो ठीक है। चलते हैं, तो नेक्स्ट आ जाइए। सपोज 2 मशीन है हमारे पास, ए और बी, ठीक है। तो मुझे ये बताओ वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, ड्रॉप पर यूनिट आउटपुट ऑफ करंट
ऑफ 20 एम्पियर, यानी 20 एम्पियर करंट फ्लो होने से, करेक्ट, पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, 270, ए वाले में 270 माइनस 220 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 20, कितना आ गया, 2.5 वोल्ट एम्पियर। एक्चुअली ये हम क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट कि पर यूनिट करंट से कहीं ना कहीं इतना ड्रॉप होता है, तो जितने भी करंट पे निकालना होगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। अच्छा, इस मशीन के लिए आ जाओ, यही सेम चीज कितनी आ जाएगी, दैट इज 280 माइनस 240 बाई 20, कितना, 2 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ अगर मैं यहां से EA कैलकुलेट करूं तो कितना होगा, V प्लस 2.5 इंटू IA। अच्छा, V कितना है, EA कितना है, दैट इज 270, क्लियर। अच्छा जी, बिकॉज नो लोड पे जो वोल्टेज है दैट इज योर EG। हाँ जी सर, ऑफ कोर्स, तो EG इज इक्वल टू V प्लस IARA जैसे लिखते हो आप। अच्छा सर, इसको मान लीजिए मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, राइट। अच्छा, दूसरा यहां पे व्हाट इज EB, अगेन व्हाट इज EG, EB मतलब AB मीन्स AB मशीन, बट EMF क्या है, 5P NZ by 60A, दैट इज द वोल्टेज जनरेटेड एट नो लोड, करेक्ट। तो कितना है नो लोड पे वोल्टेज, 280। तो यहां से क्या लिखूं मैं, V प्लस 2 इंटू IB इज इक्वल टू 280, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये हमारा तैयार हो चुका है। अब जो क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से हम चलेंगे। अच्छा सर, तो यानी कि इन फर्स्ट क्वेश्चन, सी हियर, इन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोड, लोड इज ए रेसिस्टिव लोड, सपोज दिस इज द लोड, करेक्ट, हाउ मच, 6 ओम, ये वोल्टेज कितना है, V, राइट। तो नाउ टेल मी, जो भी करंट इधर आ रहा होगा दैट करंट इज IA प्लस IB ना, दोनों मशीन से, हाँ जी। तो टेल मी व्हाट इज V इज इक्वल टू, तो 6 इंटू IA प्लस IB, यस सर, राइट। अच्छा सर, और इसको मान लीजिए मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं, राइट। अब देखो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, दैट इज द इक्वेशन बिटवीन V, IA एंड IB, 3 अननोन, 3 इक्वेशन। तो सॉल्विंग 1 2 3, सॉल्विंग 1 2 एंड 3, तीनों को सॉल्व करते हैं। फाइनली कितना आ जाएगा, IA इज इक्वल टू 15 एम्पियर एंड IB इज इक्वल टू 23.75 एम्पियर और वोल्टेज 232.5 वोल्ट। ठीक है, ये आ जाएगा सॉल्विंग 1 2 3। अच्छा, अब इसी में बोल रहा है, एक ए पार्ट तो हो गया सॉल्व हमारा, हाँ जी। बी पार्ट में बोल रहा है कि सपोज देयर इज ए बैटरी विथ सम रेसिस्टेंस दिया हुआ है। चलिए सर वो भी करते हैं। कम टू द बी पार्ट, दैट बी पार्ट इज ए बैटरी विथ सम रेसिस्टेंस। ठीक है, हाँ जी सर। तो क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू, यहाँ पे तो जितना वोल्ट का बैटरी है वो तो रहेगा ही रहेगा, यस सर, 220 प्लस 1.1 इंटू IA प्लस IAB, मान लो ये करंट IA प्लस IAB है, ठीक है, तो ये वोल्टेज यही हो जाएगा, हाँ जी। अगेन सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, तो 1 2 इक्वेशन तो था ही, अब 4 के साथ सॉल्व कर देंगे, जैसे 1 2 3 को सॉल्व किया, 1 2 4 को सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो सॉल्विंग, करेक्ट, 1 2 एंड 4, तो कितना आ जाएगा, IA इज इक्वल टू 8.944, IB इज इक्वल टू 16.18 एम्पियर और वोल्टेज फिर इसमें रख दोगे ये दोनों वैल्यू, हाउ मच, 247.64 वोल्ट। ठीक, अभी मेनली सपोज इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी सपोज नहीं अगर क्लिक कर रहा हो तो घबराना नहीं, ठीक है, टाइम लग रहा हो कोई बात नहीं। मेनली जस्ट टू इनरिच योर नॉलेज आई एम गिविंग यू गुड क्वेश्चंस। तो इवन सेशन होने के बाद भी आराम से सॉल्व करके क्वेश्चंस को सीखने का प्रयास करना, ट्राई करना, ठीक है, घबराना नहीं। ठीक है, आप पिक्चर ले सकते हैं। चलो, डीसी मशीन का लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद सिंक्रोनस से स्टार्ट करेंगे। कितना टाइम हो गया, ठीक है, बहुत ठीक चल रहे हैं हम टाइम के हिसाब से।
चलो ए 230 वोल्ट 870 आरपीएम राइट, 100 वोल्ट डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर has an armature resistance of 0.05. It is coupled to an overwhelming load of this much. Determine the speed at which the motor can hold the load by regenerative braking. चलो regenerative braking पहले बताओ मुझे क्या होता है। देखो बड़ा ही सिंपल है, करेक्ट। ये तो डीसी मशीन का क्वेश्चन है, मैं आपको इंडक्शन मोटर का एक एग्जांपल देता हूं। क्यों? क्योंकि मान लो दिल्ली मेट्रो है, हाँ जी, हर 2 किलोमीटर के आसपास एक स्टेशन है, हाँ जी, यहां से चली मेट्रो, हाँ जी, फिर उसको रुकना है, यानी स्पीड हैज टू बी 0, हाँ जी। तो जो व्हील्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी तो फिर से 0 होना है, हाँ जी। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें ताकि व्हील्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, राइट, वो काइनेटिक एनर्जी हम वापस से यूटिलाइज कर लें अपने लिए, हाँ जी। तो बस हम क्या करते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी को, राइट, यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कुछ बैटरी वगैरह चार्ज कर लेते हैं, राइट। तो इसी को बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, यानी ब्रेक भी लगा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी हम ले रहे हैं, यानी ये स्पीड कम होगी और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग। कितना सिंपल है। अच्छा सर, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग अब जरा डीसी मशीन में आ जाए, हाँ जी। तो बस सिंपल है, देखो अगर मान लो ये मोटर था पहले, हाँ जी सर, तो करंट ले रहा था, हाँ जी। अब जैसे ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगी तो क्या करेंगे बताओ, सप्लाई हटा करके यहां पे कुछ रेसिस्टेंस या कुछ भी जो भी चाहिए हमें वो कनेक्ट कर देते हैं। तो अब यही एनर्जी वापस से देने लग जाता है, यानी कि जो मोटर था वो जनरेटर बन गया। तो कहां से जनरेटर बन गया? अरे एनर्जी कहां से ला रहा है सर? अरे इसके व्हील्स के पास एनर्जी है ना, तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वापस से देने लग जाएगा, फिर वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी करनी है, लेकिन जो लोड है उसको भी मेंटेन करना है। तो उसके लिए बताइए कि स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि दोनों मेंटेन रहे। चलो जी, तो पहली बात बताओ, पहले कंडीशन, पहला कंडीशन देखते हैं, फिर दूसरा, है ना, यही बात होती है हर क्वेश्चन में। चलो, EB इज इक्वल टू K phi ओमेगा 1 इज इक्वल टू B माइनस IA1 इंटू RA, EB B माइनस है तो K phi ओमेगा, तो यहां से कितना हो जाएगा ये 230 माइनस 100 इंटू 0.05, हाउ मच इट इज 225 वोल्ट। तो K phi कितना आ जाएगा, दैट इज 225 अपॉन ओमेगा 1। ओमेगा 1 कहां से निकालोगे, स्पीड गिवन है ना 870, हाँ जी। तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2 पाई n बाई 60, कितना आ जाएगा 91.1 रेडियन पर सेकेंड। तो इसमें रख दें, कितना आ जाएगा ये 2.47 वोल्ट सेकेंड पर रेडियन। ठीक है, यूनिट तो कोई बात नहीं, वो तो आप देख ही लोगे। ओमेगा 1 का वैल्यू उधर से हमने इधर रखा तो 2.47 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि जी डेवलप टॉर्क पहले, तो कितना है डेवलप टॉर्क, दैट इज K phi इंटू IA1, हाउ मच K phi 2.47 इंटू IA1 इज 100 ना, पहले कितना 100, तो हाउ मच इट इज 247 न्यूटन मीटर। ये आपका हो गया पहला टॉर्क। अब बोल रहा है करेक्ट, कपल्ड एंड ओवर हॉलिंग लोड ऑफ 400, ये जो ब्रेकिंग टॉर्क है यही है। ठीक है, तो ये आपका शुरू वाला कंडीशन हो गया जब एज ए मोटर वो चल रहा था। ठीक है, चलो जी, अब आगे बढ़े। तो ब्रेकिंग टॉर्क इज 400 न्यूटन मीटर दे रखा है। तो कैन आई राइट K phi इंटू IA2 इज इक्वल टू 400। तो यहां से व्हाट इज IA2? IA2 इज इक्वल टू 400 बाई 2.47, 161.94 एम्पियर। ये करंट उस टाइम में इसमें फ्लो होगा। तो अब जब ये करंट फ्लो होगा तो उस टाइम में वो क्या बन जाएगा, जनरेटर बन जाएगा। तो KVL क्या लिखोगे, EB2 इज इक्वल टू V प्लस IA2 इंटू RA। देखना प्लस साइन, ठीक है, यहां माइनस साइन था, यहां प्लस, क्योंकि अब वो जनरेटर बन चुका है, वो पावर देने लग गया है। कहां से दे रहा है, अपने व्हील्स में जो काइनेटिक एनर्जी है वहां से दे रहा है, यानी रोटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वहां से फेड कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर, चलिए
230 plus 161.94 into 0.05, how much it is? 238.1, और that is equal to कितना? k phi omega 2. तो यहां से what is omega 2? 238.1 अपॉन k phi तो निकाल चुके हैं, 2 पॉइंट कितना आ गया? 96.4 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, तो यहां से स्पीड पूछ रहा है, तो 2πn/60 तो कितना आ जाता है? 921 आरपीएम. ठीक है, बस हो गया सॉल्व. तो ये ब्रेकिंग का भी एक मैंने इंक्लूड किया था. ठीक है, क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे डीसी मशीन में इतने क्वेश्चंस मैंने अभी सेलेक्ट किए हैं, जितना टाइम परमिट कर रहा है उस हिसाब से. ठीक है, अब जरा सिंक्रोनस में चलेंगे. राइट, ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ो एक बार. ए 2000 वोल्ट 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिलिंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मोटर विथ ए सिंक्रोनस रिएक्टेंस कनेक्टेड टू ए टर्बो अल्टरनेटर. ठीक है, यानी कि एक मोटर है जो कि एक टर्बो अल्टरनेटर से कनेक्टेड है. ठीक बात? अच्छा सर, which has a synchronous reactance of 3.25 ohm through a long transmission line of reactance of 1.25 ohm. The synchronous motor is drawing 100 ampere at rated voltage and unity power factor. Find the power and the maximum power. ठीक है, ओके फाइन. तो इस क्वेश्चन में देखो, एक जनरेटर है, दैट जनरेटर इज गोइंग टू डिलीवर पावर टू ए मोटर थ्रू ए ट्रांसमिशन लाइन. तो यानी कि सर्किट समझ में आ रहा है? अच्छा, ड्रॉ कर देता हूं मैं आपके लिए. क्वेश्चन लिखोगे तब तक लिख लो फटाफट. ओके फाइन, चलो. देखो, डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं ताकि क्लियरिटी रहती है. ठीक है, मान लो यहां जनरेटर होगा, उसका रिएक्टेंस होगा, ट्रांसमिशन लाइन होगा, फिर मोटर का रिएक्टेंस होगा और ये मोटर का वोल्टेज होगा. ठीक, तो दिस इज सपोज EFG जनरेटर का जो है ना, इनटू डेल्टा जी. ये जनरेटर साइड है, करंट ऐसे जा रहा है. राइट, दिस इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर, दिस इज ट्रांसमिशन लाइन सिंक्रोनस रिएक्टेंस, दिस इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ मोटर. और मान लीजिए ये मोटर का EF है और माइनस डेल्टा इंटू एम लिख दें. माइनस में से ये वो साइन के साथ, पता है आपको? ठीक है, अब मुझे ये बताओ यहाँ का वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज. ठीक है, कितना लिखोगे? सर ये वोल्टेज तो V एंगल 0 है, और जो करंट फ्लो हो रहा है दैट करंट इज ऑल्सो यूनिटी पावर फैक्टर करंट, इट इज गिवन. तो कितना लिखूं? सर IA भी IA एंगल 0 रखिए. क्यों लिखा 0? क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर है. ठीक है जी, यानी यूनिटी पावर फैक्टर इज मेंटेन्ड हियर. ठीक है, ओके. यहां पे मोटर इज ड्रॉइंग करंट थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, दिस जनरेटर इज सप्लाइंग करंट. यही क्वेश्चन है. हाँ जी सर. तो अब जरा दोनों साइड में देखें हम. राइट, सी बोथ द साइड. तो यहां क्या हो जाएगा? EF मोटर इज इक्वल टू V एंगल 0 है ना, माइनस V माइनस ड्रॉप होकर के यहां तक पहुंचेगा. हाँ जी, माइनस JIA एंगल 0 इंटू J एक्सेस मोटर है ना, V माइनस JIA एक्सेस. तो EF मोटर इज इक्वल टू V माइनस IA XM इंटू J. तो कैसा फील आ रहा है ये? A माइनस BJ वाली फील आ रही है. तो अंडर रूट A² प्लस B² हो जाता है, मैग्नीट्यूड चाहिए तो. हाँ जी, इसीलिए इस तरह का डेटा भी लिया है ताकि थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल ना हो. अब आ जाओ इधर के साइड. तो EF जनरेटर कितना होगा? तो EF जनरेटर माइनस दिस इज इक्वल टू V. हाँ जी, तो कैन आई राइट डायरेक्टली V प्लस IA इंटू एक्सेस G प्लस X ट्रांसमिशन लाइन इंटू J.
हाँ जी, अगेन ये कैसे फील आ रही है, ए प्लस बी जे वाली फील आ रही है, हाँ जी, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो नाउ टेल मी फ्रॉम हियर ई एफ जी का मैग्नीट्यूड कितना, तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो जी। अच्छा, वोल्टेज वगैरह तो निकाल लिया होगा ना, वोल्टेज कितना आएगा 2000 बाय रूट 3, कितना आ रहा था 1154.7 वोल्ट, ठीक है। चलो तो 1154.7 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू 4.5 का स्क्वायर, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू, कितना आ रहा है 1239.3 वोल्ट, ठीक है। और डेल्टा जी कितना आ जाएगा एंगल, तो टेन इनवर्स y बाई एक्स होता ना, टेन इनवर्स b बाई ए, हाँ जी, तो टेन इनवर्स 45 अपॉन 45 नहीं, कितना 450 अपॉन 1154.7, 21.29 डिग्री, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, व्हाट इज डेल्टा एम, पहले ई एफ एम कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज ई एफ एम, ई एफ एम इज इक्वल टू अंडर रूट अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1154.7 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ रहा है 1171.9 वोल्ट। व्हाट इज डेल्टा एम, tan इनवर्स 200 बाई 1154.7, कितना 9.83 डिग्री, ठीक है। ये दोनों वैल्यू दोनों के लिए कैलकुलेट कर लिया, हाँ जी। अब जरा इसको क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, क्या कह रहा है। मान लो सपोज ये तुम्हारा वोल्टेज रहा होगा, सपोज वी एंगल 0 हम जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या था ई एफ माइनस समथिंग इज इक्वल टू वी, और इसमें क्या था वी माइनस समथिंग इज इक्वल टू, ठीक है। तो यानी इसमें जनरेटर वाले केस में वी में समथिंग ऐड करके फिर ई एफ आया था, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बात है। और मोटर वाले केस में जब हम मोटर में यानी जो ई एफ मोटर था, राइट, उसमें समथिंग ऐड किया था तब वी पे पहुंचे थे, समझ में आ गया, केवीएल समझा रहा हूं, हाँ जी। और ये समथिंग क्या था, ये ऑलरेडी यू नो जे इंटू आई ए इंटू, ठीक है, ओके फाइन। इसलिए ये वी पे क्या है, आपको ये 90 दिख रहा होगा, क्योंकि वी प्लस जे आई ए समथिंग और वी माइनस जे आई ए समथिंग, ठीक है। अच्छा, तो ये एंगल पता है, हाँ सर पता है, हाउ मच 21.29 डिग्री, ये एंगल 9.83 डिग्री। अच्छा, तो टोटल एंगल बताओ कितना, मीन्स पॉइंट यहां पे ये है कि व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू वैल्यू, ये टोटल एंगल, तो सर दोनों का सम हो जाएगा, तो बस अब पावर वाला इक्वेशन लगा दो, v इंटू ई एफ बाई एक्सेस लिखते हैं ना, इंटू साइन ऑफ एंगल, तो एंगल टोटल एंगल ले लो दोनों के बीच में, क्योंकि पूछ रहा है कितना मैक्सिमम, ऐसा ही है ना कुछ क्वेश्चन, हाँ जी सर। तो चलो ए पार्ट लिखे अब, ठीक है। ए पार्ट में कह रहा है पीजीएम बताइए कितना होगा, तो 3 इंटू 1239.3 इंटू 1171.9 अपॉन 6.5, ठीक है, इंटू साइन ऑफ 31.12 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आएगा 31.12, तो कितना आ गया, हाउ मच 346.4 किलोवाट। दिस इज योर आंसर। बी पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर कब होगा, तब ये जो डेल्टा जी एम है यानी जी एम, ठीक है, पूरा एंगल, तो ये कितना हो जाए 90 डिग्री, ठीक है सर। तो पीजी मैक्स, पीजी एम मैक्स इज इक्वल टू हाउ मच 3 इंटू 12, या ये जो वैल्यू है ना इसी को इससे मल्टीप्लाई किया था, तो इस टर्म से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये तो 1 होना है, बट एनीवे फिर से लिख देता हूं मैं 39.3 इंटू 1171.9 डिवाइडेड बाय 6.5, कितना आ रहा है, हाउ मच इट इज 670.3 किलोवाट, ठीक है, क्लियर है। चलो लिख लो, या बाद में लिख लेना, दैट्स फाइन। ठीक है, क्लियर है।
जनरेटर और मोटर, ओवरऑल बातें हो रही हैं ये दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। तो टोटल एंगल हम ले रहे हैं इसीलिए। चलो आप लोगों का क्या हाल चाल है, कितना आया? बोल रहा है सर थोड़ा जोक सुनाइए, थोड़ा थक गए हैं तो। अरे अब लाइव क्लासेस में लिमिटेड होती है ना टाइम, तो जोक क्या सुनाओ। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, देखो थोड़ा जोर पड़ रहा होगा दिमाग पे, बट टेंशन मत लो यार, ठीक है। जितना हो पा रहा है अभी करो, बाद में फिर देख लेना, ठीक है। इनरिच्ड है ना, समझ में आया कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। ए 3-phase टर्बो अल्टरनेटर विथ ए सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ, रिएक्टेंस है ये, इसको थोड़ा सा ओम लिख लेना, ठीक है। पर फेज एंड निग्लिजिबल आर्मेचर रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 11 kV कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बस बार एंड सप्लाइज 100 एम्पियर एट यूनिटी पावर फैक्टर टू द सिस्टम। तो देखो भाई पहला केस समझ में आ गया, 100 एम्पियर यूनिटी पावर फैक्टर पे ये जो जनरेटर भाई साहब हैं ये सप्लाई कर रहे हैं, जिनका रिएक्टेंस इतना है, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में क्या आया होगा, EF = V + JIA/XS। अच्छा हो गया। अब कह रहा है इफ द टरबाइन पावर इज केप्ट कांस्टेंट। अच्छा जी, टरबाइन पावर मतलब मैकेनिकल एनर्जी, राइट, यानी कि एक्टिव पावर कांस्टेंट है। एक्टिव पावर कांस्टेंट का मतलब ये लाइन सुनते ही क्या आना चाहिए सर, IA1 cos phi1 = IA2 cos phi2, मतलब VIA cos phi, V तो कैंसिल ही हो जाएगा, या सर EF1 sin ∆1 = EF2 sin ∆2, बस यही होता है एक्टिव पावर कांस्टेंट का मतलब। अच्छा, एंड द एक्साइटेशन ऑफ द अल्टरनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। देखो एक्साइटेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये वाला चलेगा, इसकी जरूरत शायद ना पड़े, ठीक है। What would be the new current and power factor? Make appropriate assumptions। कुछ चाहिए तो ले लो assumption, ठीक है। तो यानी पहले EF1 तो चाहिए, हाँ सर वो तो चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं व्हाट इज EF, पहला केस ले लेते हैं। EF1 ∆1 = V कितना है 11,000/√3। एक चीज और देखना, शायद इसमें स्टार कनेक्टेड नहीं दिया है ना, 3-phase टर्बो विद सिंक्रोनस, हाँ ठीक है। मैं जानबूझ करके ये क्वेश्चन उठाया था, इसमें स्टार कनेक्टेड डेल्टा कनेक्टेड नहीं दिया है। सपोज इफ इट इज नॉट मेंशन्ड तो आप स्टार कनेक्टेड एज्यूम करके चलना, ये लिखा है ना एज्यूम सुटेबल एजम्पशन, स्टार कनेक्टेड एज्यूम करके चलना। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिए रहते हैं तभी तो ऑब्जेक्टिव का आंसर आएगा, बट नहीं दिए हो तो स्टार एज्यूम करके आप पहले सॉल्व करना उसको, ठीक है। और अगर डेल्टा लिखा हुआ है, इफ इट इज रिटन, तब तो आप डेल्टा ही लोगे, करेक्ट। चलो तो ये हो गया, प्लस कितना है 120 × 0, 120 एम्पियर है ना, सॉरी 100 है ना, 100 नॉट 120, 100। ओहो हो, फिर से बनाना पड़ेगा डायग्राम। आ गया, यही था ना। चलो क्वेश्चन हट गया, चलो क्वेश्चन तो लिख ही लिए होगे, मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन ही डिलीट हो गया, चलो ओके फाइन, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां तक आ चुके हम लोग। हाँ जी, हाउ मच इट इज 100 × एंगल 0 × J10, तो कितना आ जाएगा 6429.25 एंगल 8.95 डिग्री वोल्ट, ये आ गया पहला कंडीशन। नाउ टेल मी, इट इज गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट, व्हाट इज गिवन, EF2 इज 1.25 टाइम्स EF1, क्योंकि 25% बढ़ा दिया था, तो कितना हो जाएगा EF2 1.25 × 6429.25, कितना हो गया 8036.56 वोल्ट। तो फॉर दिस एक्साइटेशन, करेक्ट। अब एक्टिव पावर कांस्टेंट है, राइट, तो चलो EF2 तो आ गया, हाँ जी। तो एक्टिव पावर कांस्टेंट है, तो मैंने कहा इन दोनों में से कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हैं, तो जनरली दे आर टॉकिंग अबाउट एक्साइटेशन, तो इधर ही चलेंगे हम। हाँ जी सर,
अच्छा मान लीजिए सपोज आपके दिमाग में आ रहा है कि सर आपको कैसे पता चला कि ये लगेगा। देखो भाई ये तो समझ में आ गया, इतना तो कोई भी यूज कर लोगे। हाँ जी सर, तो मान लो सपोज यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर करंट, मान लो, ठीक है, तो क्या होता है करंट EF माइनस V बाई JXS। EF कितना लोगे सर, ये तो ले लेंगे सर 0.56 एंगल 7.15 डिग्री माइनस 6351 एंगल 0 डिवाइडेड बाय हाउ मच 10 एंगल 90। तो अब मैं बोल रहा हूं आपको कि ये EF माइनस V बाई JIXS आपने लिखा, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये 7.15 कहां से लाओगे, EF का एंगल कहां से लाओगे, तो फॉर दैट यू हैव टू यूटिलाइज दिस रिलेशन, ठीक है। मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, ये यहां से आता है। कैसे आएगा, टेल मी, बोथ इक्वल है, तो कैन आई राइट साइन ऑफ डेल्टा 2 इज इक्वल टू, बोलो कितना हो जाएगा, EF1 बाई EF2 राइट इनटू साइन ऑफ डेल्टा 1, हाउ मच इट इज 0.1245। तो यहां से डेल्टा 2 कितना आ जाएगा 7.15 डिग्री, ठीक है। ये रिलेशन वाई वी हैव यूज्ड बिकॉज एक्टिव पावर इज कांस्टेंट, ठीक है। चलो जी डेल्टा 2 आ गया। अब अगर मान लो सपोज आप ये लिखते और डेल्टा 2 अननोन है, उसी के लिए वो ट्रेस करना है, क्वेश्चन के लैंग्वेज में जाना है, राइट। चलो कितना आया 190.655 एंगल माइनस 58.354 डिग्री, ठीक है। तो चलो पावर फैक्टर बताओ, तो पावर फैक्टर इज कॉस ऑफ 58.354 डिग्री 0.5246 लैगिंग, वाई द करंट इज हैविंग नेगेटिव एंगल, ठीक है। आंसर हो गया। चलो आगे बढ़े। A three-phase 17.32 kVA star-connected alternator is delivering rated load at 400 volt and a power factor of 0.8 lagging, ठीक है। ये पुरानी स्टार्टिंग की कहानी जो होती है सब क्वेश्चन में हो रही है। Its synchronous impedance is this much. Find the load angle at which it is operating. Now with the magnitude of excitation voltage held constant, the nature of rated load power factor is altered to power factor 0.8 leading. पहले क्या था 0.8 lagging. Now what we have done? Just we have changed the load power factor and excitation remains constant. यानी EF remains constant. मतलब this from this data whatever EF1 we are going to calculate, the same EF we have to use here. Only thing is power factor is changing. डिटरमाइन द न्यू वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज एंड द लोड। देखो इस क्वेश्चन में क्यों मैंने इसको चूज किया समझना, टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है। जनरली वोल्टेज कांस्टेंट होता है, अब मान लो पेपर में क्वेश्चन है और आगे वोल्टेज कितना होगा, तो तुम घबरा जाओगे कि अरे ये वोल्टेज वाला क्वेश्चन तो हमने किया नहीं कभी, वोल्टेज तो कांस्टेंट था, जबकि बात तो उतनी ही होती है, राइट। क्लियर है। अच्छा इक्वेशंस तो वही बनेंगे। अच्छा तो बट थोड़ा सा आपके आंखों के सामने से एक बार जब क्वेश्चन कोई चला जाता है ना, फिर आपको कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ चलो ये भी होगा, ठीक है। ओके फाइन, आई होप स्नैपशॉट या लिख लोगे तो लिख लो। चलो पहली बात बताओ, पहला केस, पहली जो कहानी होती है हर क्वेश्चन में, तो IA1 कितना 17.32 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 400, हाउ मच इट इज 25 एम्पियर। देन EF1 डेल्टा 1 इज इक्वल टू, अरे यार ये तो पूरा ही चला जा रहा है, चलो क्वेश्चन तो लिख लिया होगा आपने, दैट इज 400 इंटू एंगल 0 प्लस 25 एंगल माइनस कॉस इनवर्स 0.8 इंटू 0.2 प्लस J2, कितना आ गया 267.5 एंगल 7.95 डिग्री, ठीक है। तो यहां से डेल्टा 1 कितना आ गया आपका, डेल्टा 1 इज 7.95 डिग्री, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये पहला वाला पार्ट था जो दिया हुआ था, राइट। देन 0.8 लीड पे जरा बात करते हैं आप। ओके फाइन, ये तो सब लोग कैलकुलेट कर लोगे, हाँ जी। तो नाउ कम टू एट 0.8 लीडिंग, तो कितना हो जाएगा
267.5 सेम वैल्यू वी हैव टू टेक, क्यों क्वेश्चन में गिवन है द एक्साइटेशन इज सेम। अच्छा, एंगल डेल्टा 2 इज इक्वल टू V angle 0 plus 25 because V is unknown here. They are asking how much voltage will be when we are changing the load, keeping excitation constant. कौन सा characteristics होता है ऐसा बता सकता है कोई? चलो जरा कमेंट करो, ठीक है, कमेंट कीजिए कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था, वोल्टेज वर्सेस लोड करंट, कीपिंग एक्साइटेशन कांस्टेंट, उस कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या नाम था बताओ। चलो ये तो याद होना चाहिए, 36.87 इंटू 0.2 प्लस J2 है ना। कितने अननोन है सर? 2 अननोन। एसी इक्वेशन की कैपेसिटी कितनी होती है? यस, इट कैन कैलकुलेट 2 अननोन, राइट। तो स्क्वायरिंग इक्वेटिंग बोथ साइड, रियल इमेजिनरी इक्वेट कर दो, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। तो 267.5 एंगल डेल्टा 2 इज इक्वल टू, इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं रियल और इमेजिनरी को, ठीक है। अब आर एंगल थीटा इज इक्वल टू ए प्लस जे बी, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायरिंग एंड इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो कितना होगा? 267.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू वी माइनस 26 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर। यहां से वोल्टेज कितना आ रहा है? हाउ मच? 290 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज आ गया। अच्छा, अब डेल्टा 2, तो tan इनवर्स दिस बाय दिस, डेल्टा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 43 बाय v माइनस 26, दैट इज tan इनवर्स 43 बाय 290 माइनस 43, कितना आ जाएगा? 9.265 डिग्री। ये आपका डेल्टा 2 भी आ गया, ठीक है। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम बताया, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी नाइस, करेक्ट, बिल्कुल ठीक, रीना यू आर करेक्ट, वेरी नाइस। चलो अब देखो हुआ क्या, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया, देखो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है भाई, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बताया था, इफ यू कैन रिमेंबर, जब हम EF को कांस्टेंट रखते हैं, किसी एक वैल्यू पे फिक्स कर देते हैं, तो V वोल्टेज वर्सेस करंट में क्या होता है? करेक्ट, लैगिंग लोड में वोल्टेज कम होने लग जाता है, लीडिंग लोड में वोल्टेज विल इंक्रीज, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटाइजिंग होता है, फ्लक्स को बढ़ाता है, तो वोल्टेज बढ़ता है। समझ में आया? तो यही एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बोल रहा था कि अगर लैगिंग लोड से हम लीडिंग लोड कर देते हैं, कीपिंग सेम एक्साइटेशन, तो बताइए वोल्टेज कितना होगा? तो सर इसका मतलब वोल्टेज बढ़ जाना चाहिए, लीडिंग लोड हो गया, हाँ देखो 290 वोल्ट हो गया। अच्छा, पहले कितना था देख लो, है ना, 267.5 कितना आ रहा था, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ओके फाइन, चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके फाइन। The excitation of a 415 volt 3-phase delta connected synchronous motor is such that the induced EMF is this much, यानी EF की वैल्यू दिया हुआ है। जो मैंने कहा पहले की कहानी कुछ दिया रहेगा, हाँ जी वो दिया है। The impedance is also given. If the friction iron losses are also given. चलो यहाँ तक ये कहानी चल रही है। The output in kilowatt line current power factor and efficiency for this, यानी ये देखो ये तुम्हें दिया हुआ है, हर क्वेश्चन में ना कुछ कहानी दिया रहता है कि जी ऐसा ऐसा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब बताइए अगर ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, यही हर क्वेश्चन में रहता है, ठीक है। तो ये कहानी पार्ट हो गया, फिर ये क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया। चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम पावर इनपुट के लिए उसका आउटपुट कैलकुलेट कीजिए, लाइन करंट कैलकुलेट कीजिए, पावर फैक्टर और एफिशिएंसी। तो मुझे ये बताओ आप लोग, ये है क्या? सबसे पहले मोटर है, मोटर याद आया? हाँ सर याद आया, बिल्कुल आया, ठीक है। तो मोटर मतलब सर जो बस बार से करंट लेता है उसी को मोटर कहते हैं, ठीक बात है ना? हाँ जी। तो मैंने आपको डिराइव करके भी बताया था दोनों साइड का, हाँ जी। तो मुझे ये बताओ मैक्सिमम पावर इनपुट, यानी कि यहां जो हम लोग
वी आई कॉन्जुगेट कुछ करते थे ना, याद है आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। तो वी आई कॉन्जुगेट करके जो रिलेशन आता था उसकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी इनपुट पावर मैक्सिमम बोल रहा है, ठीक है। तो इनपुट पावर मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है, जल्दी बताओ, मैसेज करोगे? याद है किसी को कि लिखूं मैं? चलो अभी लिख देता हूं। तो दैट रिलेशन इज, क्या होती है ए पार्ट का, बताओ जल्दी। डेल्टा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई, दिस इज द रिलेशन ऑफ इनपुट पावर मैक्सिमम, ठीक है। चलिए सर, तो यहां से क्या होगा, तो यहां से डेल्टा आ जाएगा पाई माइनस थीटा। पाई 180 डिग्री होता है और थीटा यहां से इंपीडेंस एंगल से निकाल लोगे। ये लिख दूं यहां पे, व्हाट इज दिस वैल्यू इन 4.031 एंगल 82.875, तो कितना हो गया 82.875 डिग्री। हाउ मच इट इज 97.125 डिग्री। दिस इज योर डेल्टा, ठीक है। अच्छा सर, अब जब डेल्टा आ गया तो करंट वगैरह तो निकल ही आएगा। अच्छा सर, चलो जी, तो करंट आई ए माइनस फाइव इज इक्वल टू वी एंगल 0 माइनस ई एफ एंगल माइनस डेल्टा अपॉन जेड एंगल थीटा। हाउ मच 415 एंगल 0 दिया हुआ है, 520 माइनस 97.125 डिवाइडेड बाय 4.031 82.7 कितना 875, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये, दैट इज 174.75 एंगल माइनस 35.775। तो ये हमारा करंट आ गया विथ पावर फैक्टर एंगल। तो चलो जी, अब लाइन करंट पूछ रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज लाइन करंट, √3 इंटू जो फेज करंट आया है, तो √3 इंटू 174.75, हाउ मच 302.67 एम्पियर। एक ये पार्ट हो गया। देन व्हाट इज पावर फैक्टर, तो cos फाइव इज इक्वल टू cos ऑफ 35.775, ये आता है 0.8113, और एंगल से देख सकते हैं क्या है, लैगिंग। ये पार्ट भी हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट इसमें है पावर इनपुट, और फिर वहीं से क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी वगैरह आएगा, ठीक है। चलो, पावर इनपुट बताओ कितना आ जाएगा, √3 इंटू 174.75, ठीक है। ओह सॉरी, करंट ये तो हो गया फेज करंट, लाइन करंट 302.67 है ना। अब इसको डिलीट नहीं करूंगा, सारे डिलीट हो जाएंगे, कट कर देता हूँ, ठीक है। तो √3 इंटू 415 इंटू 302.67, क्योंकि √3 VLIL cos पाई हम यूज करेंगे, इंटू 0.8113, हाउ मच इट इज 176.51 किलोवाट, ठीक है। चलो, ये तुम्हारा इनपुट पावर हो गया। अब टोटल लॉसेस कितने हैं, टोटल लॉसेस इज 3 इंटू 174.75 स्क्वायर इंटू 0.5 प्लस जो आयरन फ्रिक्शन विंडेज वगैरह है, तो इससे 46.8063 किलोवाट आ गया, ठीक है। दिस इज योर लॉसेस। अब आउटपुट, तो पावर आउटपुट इज इनपुट माइनस लॉसेस। तो इनपुट कितना है 176.51 माइनस ये कितना आ जाएगा 46.8063, ठीक है, किलोवाट। सो हाउ मच इट इज 129.704 किलोवाट। अगर एचपी में निकालना हो तो 129.704 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 746, 173.87 एचपी। अगर हॉर्स पावर में निकालना है 746 से डिवाइड कर दो। अब एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी तो जानती हो, आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100, 129.704 अपॉन 176.51 इंटू 100, हाउ मच इट इज 73.48%। ये भी आ गया, ठीक है। आउटपुट इन एचपी ये भी आ गया।
जो भी निकालना है हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट्स फाइन। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पे ये है सुनना, एज फील्ड इनपुट या रेसिस्टेंस और field input is not given, that is why I have not added field input here। ठीक है, आउटपुट में तो देयर इज नो रिलेशन ऑफ फील्ड सर्किट, बिकॉज वो जो भी करंट आता है दैट सप्लाई, फील्ड में जो सप्लाई हम देते हैं, जो पावर देते हैं, वो फील्ड कॉपर लॉस में चला जाता है। ठीक है, उससे हम फ्लक्स लेते हैं, फ्लक्स तो इमेजिनरी है, तो वॉट एवर फील्ड इनपुट वी आर गिविंग दैट इज गोइंग इनटू दैट कॉपर लॉस ऑफ फील्ड वाइंडिंग। तो आउटपुट में वो नहीं आता, लेकिन इनपुट में तो पैसा तो खर्च हो रहा है ना, तो इनपुट में तो आना चाहिए ना, तो जो मशीन की इनपुट है उसके साथ साथ फील्ड का भी इनपुट लेना पड़ेगा। बट हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन्ड, दैट इज व्हाई आई हैव नॉट रिटन। ठीक है, चलिए बी पार्ट आ जाए, लिखना है तो लिख लो। चलो बी पार्ट में चलते हैं। तो बी पार्ट में मैक्सिमम आउटपुट बोल रहा है, राइट? जैसे उसमें क्या था, मैक्सिमम इनपुट, यहां पे मैक्सिमम आउटपुट। फिर से बोलूंगा, ये वाला डायग्राम अगर आपको याद हो, राइट? अब मोटर ये है तो इधर इनपुट, ये वाला आउटपुट, यानी इधर का जो डेवलप्ड पावर होगा दैट पावर मैक्सिमम कब होगा वो दिमाग में लगाना है, राइट? तो उसके लिए क्या होता है, मैक्सिमम आउटपुट इज मैक्सिमम डेवलप्ड पावर। ठीक है, तो उसकी रिलेशन क्या होती है, डेल्टा इज इक्वल टू थीटा, हाउ मच, 82.875 डिग्री। तो अब ये रिलेशन अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे ना, दैट इज व्हाई आई हैव सेलेक्टेड दिस क्वेश्चन। समझ में आया? चलो, तो करंट कितना हो जाएगा, IA माइनस 5 इज इक्वल टू 415 एंगल 0 माइनस 520 इंटू माइनस 82.875 डिवाइडेड बाय 4.031 एंगल 82.875। ठीक है, कितना आ जाएगा, 154.75 एंगल माइनस 27.065। ठीक है, दिस इज योर करंट। तो लाइन करंट वगैरह निकाल लेंगे सर। तो लाइन करंट इज √3 इंटू 154.75, हाउ मच, 268 एम्पियर। पावर फैक्टर cos 5 0.8905, क्योंकि निगेटिव है तो क्या लिखोगे, लैग। अब पावर इनपुट देख लें, तो √3 इंटू 415 इंटू 268 इंटू 0.8905, √3 VI cos 5। ठीक है, तो अब बस यहाँ पे लाइन वैल्यू निकाल के √3 टाइम्स करके फेज को लिखना, 268 आएगा, हाउ मच, 171.543 किलोवाट। ठीक है, चलो ये तो हो गया इनपुट पावर। अब व्हाट इज द टोटल लॉसेस, क्योंकि तभी तो आउटपुट और एफिशिएंसी के डायरेक्शन में हम जाएंगे। हाँ सर बिल्कुल, तो चलो टोटल लॉसेस। सो दिस टोटल लॉसेस इज आर्मेचर कॉपर लॉस 3 इंटू 154.75 स्क्वायर इंटू 0.5 प्लस 1000, 36.921 किलोवाट। ठीक, चलो जी, आउटपुट पावर कितना होगा, इनपुट पावर माइनस टोटल लॉसेस। ठीक है, हाउ मच, 171.543 माइनस 36.921, तो कितना आ जाएगा, 134.622 किलोवाट। अब हॉर्स पावर में तो डिवाइडेड बाय 146 कर लोगे, तो लिख देता हूं मैं डायरेक्ट 180.46 हॉर्स पावर। ये पार्ट भी हो गया। अब एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट, हाउ मच, 134.622 डिवाइडेड बाय 171.543 इंटू 100, कितना, 78.48%। तो अभी कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, 78.48%। ठीक है, जब मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है उस टाइम में 78.48% है, और जब मैक्सिमम इनपुट ले रहा है तो 73.48% है। ठीक है, क्लियर है, समझना। मैक्सिमम इनपुट जब ले रहा था तो 73.48 और मैक्सिमम आउटपुट में 78.48। तो मैक्सिमम आउटपुट में क्या हो रहा है, एफिशिएंसी ज़्यादा हो रही है। तो क्या करना चाहोगे,
मैक्सिमम इनपुट या मैक्सिमम आउटपुट? ऑफ कोर्स सर मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम इनपुट क्यों लेंगे? तो आखिर ऐसा होता क्यों है कि जब मैक्सिमम इनपुट ले रहा था, मतलब इनपुट ज़्यादा ले रहा था, तो फिर भी आउटपुट ज़्यादा नहीं दे पाया, तभी तो उधर एफिशिएंसी कम है ना इसके रिस्पेक्ट में, तो उस टाइम में कॉपर लॉस ज़्यादा होने लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर मैक्सिमम पावर की बात करते हैं तो हम मैक्सिमम आउटपुट को फेवर करते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट, कई बार वो स्टेबिलिटी लिमिट करके पूछता है, फिर से रिपीट करता हूं, स्टेबिलिटी लिमिट पिछले बार भी पूछा था, मैक्सिमम लोगों ने गलत दिए थे आंसर। ठीक है, तो स्टेबिलिटी लिमिट का मतलब जरा समझना, द पावर विच इज गोइंग टू बैलेंस द रोटर, करेक्ट, दैट डिटरमाइंस द स्टेबिलिटी। इनपुट में क्या ले रहा है उससे मतलब नहीं है, रोटर कहां कनेक्टेड है सर, मशीन पे कनेक्टेड है, तो यानी कि जो डेवलप्ड पावर यहां पे होगा दैट इज गोइंग टू कंट्रोल द रोटर ना, यस। और रोटर कंट्रोल में है तो बस हो गया, स्टेबल रहेगा। जितने पावर सिस्टम फॉल्ट वगैरह पड़े होंगे तो जो भी स्विंग इक्वेशन जो भी होती थी तो रोटर ही तो भागता था, तभी तो देखते होगे डेल्टा वगैरह चेंज होता था। हाँ जी, तो जब तक रोटर तुम्हारे कंट्रोल में चल रहा है तब तक ठीक है, कुछ नहीं हो रहा मशीन में, राइट। तो जो डेवलप्ड पावर यहां है, राइट, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज स्टेबिलिटी लिमिट। आई रिपीट, डेवलप्ड पावर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज, ठीक है, दैट इज योर स्टेबिलिटी लिमिट। मतलब शाफ्ट के पास जो पावर है, ये ध्यान रखना, अगर जनरेटर है तो जनरेटर में बताओ शाफ्ट यानी इनपुट से आ रहा है, हाँ जी, तो वहां भी जो जनरेटेड पावर है दैट इज गोइंग टू कंट्रोल द रोटर, तो रोटर के पास देखना कौन सा पावर है दैट इज गोइंग टू कंट्रोल द रोटर, दैट इज द फंडामेंटल, राइट। कभी गलती नहीं होगी। बुक्स वगैरह में गलतियां हैं, देखोगे सर इस बुक में तो ये दिया है वो दिया है, अरे जाने दो, क्या करोगे, ठीक है। चलो लिख लो, टाइम है ना अभी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ए 6.6 kV स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस मोटर वर्क्स एट कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट एक्साइटेशन। चलो भाई, इसमें वोल्टेज भी कांस्टेंट है, एक्साइटेशन भी कांस्टेंट है, क्या बात है। सिंक्रोनस रिएक्टेंस गिवन है एंड आर्मेचर रेसिस्टेंस, व्हेन द इनपुट इज दिस मच द पावर फैक्टर इज दिस मच, फाइंड द पावर फैक्टर व्हेन द इनपुट इज इंक्रीज टू 1500 किलोवाट। देखो अगेन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, मैं क्यों ये लिखा, क्योंकि अब इनपुट को चेंज किया। अब ऐसा लैंग्वेज कई बार हमें मिलता नहीं है किसी क्वेश्चन में, हम किए नहीं होते हैं, घबरा जाते हैं, इसीलिए चेंज मैंने चूज किया था, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, राइट। चलो तो देखते हैं, तो पहले वाले केस के हिसाब से जरा आ जाओ, है ना, पहले वाले केस के हिसाब से आ जाओ जो दिया है, फिर बाद में हम उसको चेंज करेंगे। हाँ जी, तो टेल मी वोल्टेज 6600/√3, हाउ मच, 3810.5 वोल्ट। चलो जी, इनपुट जब पावर इनपुट 1000 किलोवाट यानी कि 1 मेगावाट भी बोल सकते हैं इसको, हाँ। cos फाई कितना है, cos फाई इज 0.8 लीडिंग, ये भी दिया है, राइट। तो करंट कितना होगा, IA1 इज इक्वल टू 10⁻6 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 6600 इंटू 0.8, 109.35 एम्पियर करंट आ गया। तो व्हाट इज EF 1 इंटू डेल्टा, क्यों निकाला, क्योंकि बेसिकली एक्साइटेशन रिमेन्स कांस्टेंट, तो पहले एक्साइटेशन पता तो हो कितना है तभी तो कांस्टेंट करेंगे उसको। 3810.5 एंगल 0 माइनस 109.35 एंगल 36.87 क्योंकि लीड है, हाँ, इंटू 20J। चलो जी, तो इस कंडीशन से हम देखें तो हाउ मच दिस इज 5413.24 माइनस 18.86 डिग्री, ठीक है। चलो जी, दिस इज एक्साइटेशन। अब कह रहा है पावर इनपुट इज इंक्रीज टू दिस मच, लेकिन वोल्टेज और एक्साइटेशन कांस्टेंट रहेगा। तो पहली बात मुझे ये बताओ पावर होता क्या है, तो सर 3VEF/XS साइन डेल्टा। तो ये बताओ, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये तो वैसे भी कांस्टेंट रहता है, तो यानी पावर चेंज करने से क्या चेंज होगा सर, डेल्टा बढ़ेगा सर, ठीक है। तो जब आपने पावर को बढ़ाया है तो डेल्टा बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो चलो निकालते हैं कितना हो जाएगा ये डेल्टा। तो यहां से बताओ साइन डेल्टा 2 नाम दे देता हूं, इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इंटू XS/3VF, ठीक है। तो पावर कितना है 1.5 इंटू 10⁻6, ठीक है, अपॉन 3 इंटू 3810.5 इंटू
5413.24, ठीक है। 3VEF साइन डेल्टा इज इक्वल टू द पावर कितना आ जाएगा 0.485, तो डेल्टा 2 यहाँ से कितना आ जाएगा 29 डिग्री, ठीक है। ये डेल्टा 2 आ गया। अब करंट निकालना है हमें, ठीक है। तो करंट कितना हो जाएगा वही EF माइनस V बाई एक्सेस, तो करंट 3810.5 एंगल 0 माइनस 5431.24 एंगल माइनस 29 डिवाइडेड बाय 20.90, ठीक, 139.8 एंगल 19.64 डिग्री। तो यहाँ से cos फाई 2 कितना हो जाएगा 0.942, और करंट क्या आया है पॉजिटिव एंगल के साथ ओवरऑल, तो लीडिंग हो जाएगा, ठीक है। चलो लिख लो। ओके फाइन। नेक्स्ट आ जाइए। ए 3 फेज 6 पोल 2.3 kV स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस मोटर हैज ए सिंक्रोनस रिएक्टेंस इतना है, नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस। द मोटर इज इनिशियली ऑपरेटिंग एट ए लोड ऑफ 120 किलोवाट विद द फील्ड करंट एडजस्टेड सच दैट द आर्मेचर करंट इज मिनिमम। अब देखो जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आए ये मिनिमम है ये फलाना है करेक्ट, तो उसका भी यूज करना होता है, थोड़ा दिमाग लगाना है इधर। द फील्ड करंट इज नाउ इंक्रीज सच दैट द आर्मेचर करंट इज इंक्रीज्ड बाय 50%। अब देखो दूसरी कहानी विद दिस फील्ड करंट, अब ये फील्ड करंट बढ़ाने के बाद ये हो गया, अब बोल रहा है विथ दिस फील्ड करंट, यानी ये बढ़ा हुआ जो है हमने क्या किया लोड इज रिड्यूस्ड टू 60 किलोवाट। अब लोड को भी कम कर दिया, पहले कितना था 120, अभी कितना कर दिया 60 किलोवाट, फील्ड करंट को बढ़ा दिया। कैलकुलेट द न्यू वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर, ठीक है, समझ में आ गया। यानी स्टार्टिंग की कहानी, बीच में चेंजेस, और पूछ रहा है हम कर क्या रहे हैं, यानी ये कितना होगा, राइट। यही हर क्वेश्चन में इतना ही होता है, राइट। तो चलो सर अब बताओ कैलकुलेट द न्यू वैल्यू ऑफ, मान लो सपोज यू आर नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग, कि सर ये पढ़ करके ना ब्लैंक आउट हो जाता है दिमाग की, कुछ करना क्या है, तो जो निकालना है वही लिख लो ना सबसे पहले। जैसे मैं बोलता हूं हमेशा क्लास में भी आप लोगों को बोलता हूं ना, हाँ मान लो सपोज जो कैलकुलेट करना है वही लिख लो सबसे पहले, क्या होगा करंट, तो सर EF माइनस V बाई जे एक्सेस, चलो ठीक है, मोटर है ना ये, हाँ तो मोटर में V माइनस होगा, तो V एंगल 0 माइनस EF एंगल माइनस डेल्टा, है ना, सिंक्रोनस मोटर है, तो V माइनस EF बाई जे एक्सेस। अब खुद देखो कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, तो सर V एंगल 0, तो वोल्टेज तो सर ठीक है, वो तो इतना रेटिंग है तो वही रहेगा, ठीक है, ये दिया हुआ है सर। अच्छा जे एक्सेस, हाँ सर ये भी दिया हुआ है, तो एक्चुअली क्या निकालना है EF और डेल्टा, बिकॉज इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट दिस EF एंड डेल्टा तो अपने आप ये आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, तो वो कहां से निकलेगा, तो सर सीधी सी बात है, पहले वाले कंडीशन से हम EF निकाल लेंगे, और फिर क्या कह रहा है फील्ड करंट इज नाउ इंक्रीज्ड सच दैट द आर्मेचर करंट इज इंक्रीज्ड बाय 50%, तो यानी 50% इंक्रीज्ड करंट पे फिर EF देखेंगे कितना है, ठीक है, और फिर उसको रख देंगे उसी हिसाब से डेल्टा, तो फिर ट्रेस करोगे उसके तरफ जाओगे, यानी नाउ आवर एम इज करेक्ट टू कैलकुलेट EF एंड डेल्टा व्हेन द लोड इज दिस मच एंड द फील्ड करंट इज इंक्रीज सच दैट द, समझ में आ गया कितने स्टेप हो गए, ये फिर ये और फिर ये, देयर आर 3 स्टेप्स हियर, समझना, ठीक है। तो ऐसे सोचते हैं, कुछ भी समझ में ना आए घबराओ नहीं, जो पूछ रहा है वो लिख लो, और है ना रिवर्स इंजीनियरिंग काइंड ऑफ शुरू करो कि ये कहां से आएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आपको सोचने में आए कि सर चलो सर स्टेप बाय स्टेप बताइए, पीछे से अगर हम चलें तो ये निकालना है, एग्रीड, हाँ ये कहां से आएगा, तो सर इस पावर पे बोला है, तो जरा इस पावर पे वर्कआउट कर लो, क्या लिखोगे इस पावर पे, ठीक है, बिल्कुल रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं आपके लिए, ये हर क्वेश्चन में कर सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो, ठीक है। तो चलो ये पावर कितना है 60 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे 3 इंटू V तो निकाल लोगे, V कितना हो जाएगा, कितना है रेटिंग 2300 ना बाई रूट 3, कितना आ रहा है 1328 वोल्ट, ठीक है, और एक्सेस कितना दे रखा है 12 ओम, तो 3 इंटू 1328 इंटू, सर EF कैसे आएगा, कहां से आएगा, अभी रहने दो EF को, ठीक है, छोड़ो, नहीं है नहीं पता छोड़ो, इंटू साइन डेल्टा, वो भी नहीं पता छोड़ो,
डिवाइडेड बाय 12। अब बताओ इतना तो लिख सकते हो, फॉर दिस पावर 3VEF साइन डेल्टा बाय एक्सेस, इतना तो लिख सकते हो। हाँ सर, तो मुझे ये बताओ, पहला स्टेप तो समझ में आ गया, ये चाहिए था। हाँ जी, जब व्हेन आई हैव यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन, अगेन मेरे सामने कौन आया सर, ये आया, देखो बार बार आ रहा है ना। हाँ, अब इसको कहां से ट्रेस करें सर, इसके लिए तो बताओ EF डेल्टा से रिलेटेड व्हाट इक्वेशन एक्चुअली यू नो, तो सर हमें एक ही पता है क्या, EF माइनस डेल्टा इज इक्वल टू V एंगल 0 माइनस J IA एंगल, है ना, इंटू एक्सेस, ये KVL ये तो पता है। हाँ जी, तो लगा दो इसमें KVL। लेकिन पॉइंट यहां पे ये है करंट कितना लोगे, तो सर क्वेश्चन में दिया है कि करंट इंक्रीज हो गया 50% से, तो चलो जी साइड में ये भी काम कर लेते हैं, राइट। तो पहला वाला करंट कितना था, IA1 कितना था स्टार्टिंग में, बिल्कुल रेटिंग के हिसाब से, तो 120 किलोवाट लोड था, डिवाइडेड बाय √3 इंटू 2300 VI, ठीक है, और कॉस फाई कितना 130.123 एम्पियर, ये था। अब जब 50% से हमने इसको इंक्रीज कर दिया ड्यू टू चेंज इन एक्साइटेशन, तो बताओ IA2 कितना हो जाएगा, तो सर 1.5 टाइम्स 30.123, अच्छा सर कितना 45.185 एम्पियर, ठीक है, क्लियर। अब पॉइंट ये है कि पावर इनपुट तो हम चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, हाँ सर नहीं कर रहे, चेंज क्या कर रहे हैं, एक्साइटेशन को। तो व्हेनेवर वी आर चेंजिंग एक्साइटेशन, तो इसका मतलब एक्टिव पावर कांस्टेंट रहेगा सर। एक्टिव पावर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो सर सीधी सी बात है, IA2 cos phi 2 इज इक्वल टू IA1 cos phi 1। क्यों, IA2 वी नो, IA1 cos phi 1 वी नो, तो cos phi 2 यहां से आ जाएगा, ठीक है सर। तो cos phi 2 कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे यहां से 0.667, राइट, क्लियर है। अच्छा, अब cos phi 2 भी आ गया, राइट, क्योंकि एक्टिव पावर क्या है, कांस्टेंट है ना। नाउ इंक्रीज सच दैट द आर्मेचर करंट इज इंक्रीज्ड बाय 50% विद द फील्ड करंट, है ना। द लोड इज रिड्यूस टू 60 किलोवाट, तो 60 किलोवाट का भी हम आगे, है ना, देखते हैं। बट इतनी बात तो समझ में आ गया होगा आपको, 50% से करंट बढ़ाया, इतना हो गया, इससे हमने ये देख लिया, ठीक है। अब आ जाओ इसके करस्पॉन्डिंग EF2 निकालते हैं कि उस टाइम में EF2 कितना रहा होगा। क्यों, क्योंकि वो यूज करोगे ना, ठीक है सर। चलिए, तो EF2 कितना, इसी में रख दूं डायरेक्ट यहीं पे, चलो यहीं लिख देता हूं, 1328 पॉइंट एंगल 0 माइनस 45.187, क्योंकि करंट 45.185 या 187 कितना है, 185, 185, ठीक है, इंटू 48.2 डिग्री इंटू 12 एंगल 90 JXS, ठीक है, कितना आ गया ये 1769.4 एंगल माइनस 11.8 डिग्री, करेक्ट, क्लियर है, ओके फाइन। अब एक क्वेश्चन और आएगा आपके दिमाग में डाउट कि सर आपने यहां एंगल लीडिंग क्यों लिया, ठीक है, तो बताओ मोटर है, मोटर ही है ना क्वेश्चन में, करेक्ट, और मोटर यूनिटी पावर फैक्टर पे चल रहा है, क्योंकि मिनिमम करंट था ना उस क्वेश्चन में, तो मिनिमम करंट का मतलब यूनिटी पावर फैक्टर रहा होगा डायरेक्ट, है ना, स्टार्टिंग में। फिर हमने जब ये चेंजेस किए, एक्साइटेशन हमने बढ़ाया ताकि करंट बढ़ जाए, तो यानी कि ये यूनिटी पावर फैक्टर से लीडिंग में गया होगा, फेजर डायग्राम में देखो, और नहीं तो फिर वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व वगैरह भी यूज कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए ये इतना क्या हो जाएगा, लीड। मेरी बात समझे क्या कह रहा हूं, राइट। नहीं कुछ तो कम से कम वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व तो याद होगा, IA वर्सेस IF। अच्छा, मिनिमम करंट कब होता है, यूनिटी पावर फैक्टर पे होता है सर, चलो ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक्साइटेशन बढ़ाऊं सो दैट करंट इंक्रीज्ड, यही लिखा है ना, हाँ जी, तो इसका मतलब कौन से पावर फैक्टर पे गया, वो लीडिंग पावर फैक्टर पे गया सर। मोटर में राइट साइड में लीडिंग, जनरेटर में राइट साइड में लैगिंग, सब याद है, ओवर एक्साइटेड केस, राइट। नहीं तो एक ट्रिक भी बताया था, जनरेटर राइट साइड लैगिंग, जी, तो मोटर में राइट साइड लीडिंग, वैसे भी ओवर एक्साइटेड तो मोटर लीडिंग केस में, जनरेटर लैगिंग केस में, ठीक है।
तो वहाँ से हमने पावर फैक्टर वगैरह उसको लीडिंग ले लिया, ठीक है। और मिनिमम करंट कहाँ पे, यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो चलो EF2 भी आ गया, ओके फाइन। तो अब उस फार्मूले में रख दो, EF और डेल्टा सब आ चुका है 1769.4 और साइन डेल्टा कितना रखोगे, साइन ऑफ यहाँ से फिर आपका साइन डेल्टा आ जाएगा, ठीक है, ओके फाइन। क्योंकि जब आप लोड को देखो, एक चीज समझना, ये तो हमने करंट चेंज होने से जो इफेक्ट आया है वो निकाला है, ठीक है सर, ये हो गया, ओके फाइन। अब जब लोड चेंज किया आपने, तो लोड चेंज होने पे ये लोड वाला इक्वेशन तो यहां है ना, हाँ जी, तो अब इसका डेल्टा भी तो अलग होगा, क्लियर है कि नहीं। ये करंट चेंज वाली केस थी, अब हमने लोड भी चेंज किया, फिर से समझना, ये करंट एक्साइटेशन से हमने करंट चेंज किया। जरा फेजर में बताऊं क्या इसको, देखो यूनिटी पावर ये V था, हाँ जी, यूनिटी पावर फैक्टर पे कैसा रहा होगा, ऐसा ही तो रहा होगा ना, हाँ सर, बिल्कुल सर। तो अब मुझे आप ये बताओ, इफ यू कैन रिमेंबर, मैंने आपको कहा था राइट कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर फील्ड करंट ऑल्सो एंड दिस इज आर्मेचर करंट ऑल्सो, राइट, करेक्ट, हाँ जी सर। अब पॉइंट ये है कि विद द सेम लोड, जब लोड इतना था राइट, हमने क्या किया, एक्साइटेशन को बढ़ाया। तो एक्साइटेशन को जब बढ़ाओगे ऑफ कोर्स ये लेंथ बढ़ेगी, बट इट हैज टू बी देयर ऑन दिस लाइन ओनली, बिकॉज यही एक्सिस होती है, ये P एक्टिव पावर होता है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। तो ये घूम करके कहाँ आ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा। मतलब कहना है से दैट द पावर फैक्टर नाउ बिकम्स लीडिंग। मोटर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल सर। तो अब बोल रहा है, अब ये जो पावर था P1 जो भी 120 किलोवाट था, अब उसको भी रिड्यूस कर दिया। तो अब हम रिड्यूस करके नया वाला डेल्टा कैलकुलेट करेंगे। क्यों, जब आप पावर रिड्यूस करोगे, समझना, जब आप पावर रिड्यूस कर दोगे तो अब फिर से ये जो पॉइंट है इसको कहाँ आना है, इधर ही तो आना है ना, इसी पे आना है, राइट। तो अगेन थिंग्स विल चेंज, क्लियर है ना। अच्छा सर, तो यानी कि देखा जाए तो अब ये यहां से हम इस तरह से घूमेंगे ताकि, ठीक है, ये चीज वही रहे, बस पावर क्या हो गया, 120 से 60 हो गया। तो ये वाला जो रिलेशन हमने लिखा था वो ये वाला केस है, थर्ड केस है, क्लियर है। अच्छा, तो चलो जरा उसमें रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहीं लिख दूं, 60 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 3 इंटू 1328 इंटू 1769.4 इंटू साइन ऑफ डेल्टा। और इनफैक्ट मैं डेल्टा 3 लिख दूं, क्योंकि डेल्टा पहले डेल्टा 1 मान लो इनिशियल कंडीशन, सपोज कोई था, फिर डेल्टा 2 एक्साइटेशन बढ़ाने वाला, मान लो ये डेल्टा 1 था, ये डेल्टा 2 था, अब नया डेल्टा आएगा ना जब पावर को कम करोगे तो, राइट। तो अपॉन हाउ मच, 12, तो यहाँ से डेल्टा 3 कितना आ जाएगा, 5.86 डिग्री। अब जब ये आ गया, अब उस इक्वेशन में रख दो, व्हाट इज IA3 एंगल माइनस φ3, तो 1328 एंगल 0 माइनस 1769.4 एंगल माइनस 5.86, क्यों माइनस, माइनस डेल्टा होता है ना मोटर में, डिवाइडेड बाय 12 एंगल 90, हाउ मच इट इज 39.04 एंगल 67.3 डिग्री, ठीक है। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, करंट का एंगल पॉजिटिव आया तो लीड है ना, दिख रहा है, यहां से भी दिख रहा है, क्योंकि इसको घूम करके वहीं जाना है, राइट, विद द सेम एक्साइटेशन एंड जो भी करंट जितना है पावर को कम होने से फिर हम वहीं घूम के चले गए, हाँ जी। तो बस यानी कि देख रहे हो, ठीक है, और ज्यादा लीडिंग हो गया, या जो भी ज्यादा कम पॉइंट ये है कि लीडिंग रहेगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 67.3 डिग्री लीड, 0.386 लीड, ठीक है, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है, कभी इसको आराम से, थोड़ा सा अगर थक गए होगे अभी तो बाद में देख लेना, ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन था ये, राइट, क्लियर। पहले 0.667 लीड था, राइट, अभी कितना हो गया 0.386 लीड, यानी एंगल बढ़ गया, ठीक है। एंगल बढ़ गया मतलब, एंगल बढ़ने का मतलब ये होता है, ये फाई होता है ना, यहाँ से और थोड़ा उधर चला जाएगा। और बात भी सही है, जब पावर कम होगा इसको घूम करके यहीं जाना है, क्योंकि अब जो वट एवर एक्साइटेशन इज नाउ देयर, वो एक्साइटेशन तो सेम रहेगा, तो द सेम सर्किल विल कंटिन्यू लाइक दिस,
रेडियस कांस्टेंट, ठीक है, ओके फाइन। चलो कितना टाइम हो गया, हाँ ठीक है। सैलिएंट पोल मशीन के एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट। A 10 kVA 380 volt 50 hertz 3 phase star connected salient pole alternator has XD/XQ given है. Armature has resistance per phase of this much. The generator delivers rated load at 0.8 power factor lagging with the terminal voltage being maintained at rated value. If the load angle is this much, determine the direct XD/XQ component of current and excitation voltage of the generator. देखो why I am solving these two questions. यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक ये है एक इसके बाद होगा, फिर ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज का। बिकॉज मैं चाहता हूं कि सैलिएंट पोल में भी आपको इतनी चीजें बता दूं कि वो दिमाग में रखोगे, क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, राइट। बेसिक क्वेश्चन मतलब आप जरा समझना, सैलिएंट पोल में व्हाट आई हैव गिवन यू, मैंने कहा था 6 इक्वेशन दिमाग में रखो। इन 6 इक्वेशंस में से इन 5 में से कोई भी 3 यूज होगा, ठीक है, करेक्ट बताया था, और एक पावर वाला। तो अब इसमें कौन कौन सा यूज होगा देखते हैं। तो पहले मुझे ए पार्ट सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए आई डी क्या होता है, आई ए साइन साई, ये सब आई होप सबको क्लियर होगा। देखो भाई, ठीक है, ये ई एफ एक्सिस होता है, हाँ जी सर करेक्ट। करंट जो भी लैगिंग लीडिंग है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, डी एक्सिस, ये क्यू एक्सिस कहलाता है, राइट। तो आई डी आई ए साइन साई, तो क्या लिखूं मैं, आई ए करेक्ट। अब इस केस में 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग है, करेक्ट, अल्टरनेटर है, हाँ जी। तो लैगिंग अल्टरनेटर मतलब ओवर एक्साइटेड, हाँ जी। ओवर एक्साइटेड मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, साई इज इक्वल टू 5 प्लस डेल्टा, बताया था ना फॉर्मूला है गिवन यू, उसी में कहा था प्लस माइनस कर लेना, दैट्स फाइन। तो कितना हो जाएगा 15.2 साइन ऑफ 36.87 प्लस 16.15 डिग्री, ठीक है। आई ए कहां से आएगा, पावर से कैलकुलेट कर लेना, कर लोगे ना, या लिख दूं यहां पे, दैट आई ए इज 10 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन √3 इंटू 380, कितना 15.2 एम्पियर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1214 एम्पियर। आई क्यू कितना हो जाएगा, आई ए इंटू कॉस साइन, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 15.2 कॉस ऑफ 5 प्लस डेल्टा, ये 9.143 आ जाएगा, ठीक है। आई डी आई क्यू आ गया, हाँ जी। बी पार्ट में कह रहे हैं द एक्साइटेशन वोल्टेज ऑफ द जनरेटर। तो मैंने क्या कहा है आपको कि उसके लिए या तो ई एफ डैश के थ्रू चले जाओ या फिर एक टेन साई वाला फॉर्मूला। तो मैं ई एफ डैश के थ्रू जाता हूं क्योंकि वो फेवरेबल है, आसानी से आ जाएगा। क्या होता है ई एफ डैश, तो सर वी करेक्ट वोल्टेज प्लस जो भी आई ए माइनस 5 इंटू, बिकॉज हियर आर ए इज ऑल्सो देयर, तो वी विल कंसीडर दैट ऑल्सो, ठीक है। तो आर ए प्लस जे, याद रखना ई एफ डैश में एक्स क्यू, जे एक्स क्यू, याद आ गया, हाँ जी। आई ए लेकिन एक्स क्यू, ठीक है, हाँ जी। तो चलो जी 219.4 एंगल 0 प्लस 15.2 माइनस 36.87 इंटू 1 प्लस J8, हाउ मच इट इज 317.025 एंगल 16.15। ये आ गया ई एफ डैश एंगल डेल्टा, राइट। अब आ जाइए नेक्स्ट, व्हाट इज ई एफ, ई एफ इज इक्वल टू ई एफ डैश प्लस आई डी इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू, ठीक है, रख दो इधर। 317.025 प्लस 12.14 इंटू 12 माइनस 8, हाउ मच इट इज 365.585 वोल्ट, ठीक है। लाइन वोल्टेज अगर निकालना हो तो √3 इंटू 365.585, हाउ मच 633.2 वोल्ट आंसर, ठीक है। तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, देखो मैंने बताया आपको साई इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस डेल्टा, प्लस साइन इज यूज्ड फॉर ओवर एक्साइटेड मशीन, यानी अल्टरनेटर है तो लैगिंग पावर फैक्टर पे, मोटर रहता तो लीडिंग पावर फैक्टर पे, ठीक है। और माइनस साइन अंडर एक्साइटेड, ठीक है। अब समझ गए दोनों में कब अंडर एक्साइटेड होता है, ये तो पता है आपको, जनरेटर है तो लीडिंग पे और मोटर है तो लैगिंग पे अंडर एक्साइटेड होता है, राइट।
और उसके बाद एक तो टेन साई वाला फार्मूला, EF वाला फार्मूला, ये 3 बताया था। अदरवाइज इसके साथ आप ये दो जो स्टेप है ये दोनों, तो टोटल कितने फार्मूले हो गए, 3 इधर और 2 ये वाला अभी यूज किया हमने, एक ये वाला और एक वो वाला, तो 5। तो ओवरऑल ये 5 फार्मूला है गिवन विथ 1 पावर, यही 5 है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं सैलिएंट पोल मशीन के, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। और सैलिएंट पोल मशीन के क्वेश्चन आसान होते हैं, आई रिपीट, क्यों, क्योंकि यही 5 फार्मूले हैं, उसमें रखोगे जो भी यूज होगा आंसर आएगा, कुछ दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता। लेकिन आप डर जाते हैं, अरे सैलिएंट पोल मशीन कैसे होगा, अरे क्या ही है इसमें, देखो, ठीक है। चलो एक लास्ट और, लास्ट इस क्वेश्चन में पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। 3.5 MVA स्लो स्पीड 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर रेटेड एट दिस 30, द डायरेक्ट क्वाड्रेटर एक्सिस रिएक्टेंस इज करेक्ट एज मेजर्ड बाय स्लिप टेस्ट इज गिवन, दिस स्लिप टेस्ट से हम XD/XQ निकालते हैं, बताया था, नेग्लेक्ट आर्मेचर रेसिस्टेंस, डिटरमाइन द रेगुलेशन एंड एक्साइटेशन EMF नीडेड टू मेंटेन दिस मच टर्मिनल व्हेन द सप्लाइंग ए लोड ऑफ 2.5। देखो लोड चेंज कर दिया, रेटेड नहीं है, कुछ और लोड है, तो एट दैट लोड दे आर आस्किंग व्हाट इज द एक्साइटेशन EMF और रेगुलेशन बताइए, नो प्रॉब्लम। अगेन वही EF निकालना है मेनली ना, राइट। चलो दूसरे केस में, व्हाट मैक्सिमम पावर कैन द जनरेटर सप्लाई एट द रेटेड टर्मिनल वोल्टेज इफ द फील्ड बिकम्स ओपन सर्किटेड, एक्साइटेशन फेल हो गया, तब बताइए वो कितना मैक्सिमम पावर दे सकता है, यानी रिलक्टेंस पावर की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन लिख लो, ओके फाइन। पहली बात जरा आइए बताओ कितना है, क्योंकि वट एवर लोड इज गिवन ना उसके करस्पॉन्डिंग करंट निकालना, हमेशा रेटेड करंट मत फ्लो करा देना भाई, ठीक है ना। लोड डिसाइड हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, लोड हमेशा, जैसे हम बोलते हैं लोड बढ़ा दिया मतलब क्या, करंट बढ़ जाएगा, लोड कम हो गया यानी करंट कम हो गया, रेटेड लोड मतलब रेटेड करंट, है ना, कितना सिंपल है। तो कितना हो जाएगा 273.37 पर फेज वोल्टेज, कितना जो रेट टर्मिनल वोल्टेज है दैट इज 3810.5 वोल्ट, ठीक है। चलो अब फिर से वही EF डैश इंटू डेल्टा वाला फार्मूला, तो हाउ मच वोल्टेज 3810.5 एंगल 0 V प्लस 273.37 एंगल माइनस 36.87 इंटू J इंटू 6 XQ, IA XQ याद रखना, ठीक है। ये फार्मूला जब हम लगाते हैं XQ लेते हैं। चलो ये कितना आ गया 4971 एंगल 15.306 डिग्री, ठीक है। अब बताओ ID कितना हो जाएगा, हाउ मच IA, और क्योंकि जनरेटर है लैगिंग पावर फैक्टर है, करेक्ट, ओवर एक्साइटेड वाला, तो साइज इक्वल टू 5 प्लस डेल्टा, ठीक है। तो 5 प्लस डेल्टा कितना आ जाएगा 215.93 एम्पियर, रख दोगे ना, डेल्टा यहाँ से आ गया है, 5 तो दिया ही हुआ है, ठीक। चलो तो ए पार्ट में आ जाए, हाँ जी, व्हाट इज EF, EF इज इक्वल टू दैट EF डैश प्लस ID इंटू XD माइनस XQ, EF डैश निकाल चुके हो ऑलरेडी, ID पता है, XD माइनस XQ, तो सब वैल्यू रख दो, कितना आ रहा है, हाउ मच 5748.35 वोल्ट, ठीक है। दिस इज योर EF। तो रेगुलेशन कितना हो जाएगा, हाउ मच रेगुलेशन, दैट रेगुलेशन इज EF माइनस B बाय 5748.35 माइनस हाउ मच 3810.5 डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज 3810.5 इंटू 100, हाउ मच इट इज 50.85%। थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, बट ठीक है, आपको पता ही है, रेगुलेशन की कहानी बहुत सुना चुका हूँ मैं, करेक्ट। अच्छा ये तो हो गया ए पार्ट। बी पार्ट में पूछ रहा है इफ एक्साइटेशन फेल्स, है ना। एक्साइटेशन फेल मीन्स, सबसे पहले मुझे ये बताओ, पावर का फॉर्मूला, एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है 3EFV बाई XD साइन डेल्टा प्लस V स्क्वायर बाई 2, करेक्ट, साइन 2 डेल्टा इंटू 1 बाई XQ माइनस 1 बाई XD, और 3 लगाना है, 3 लगा दो 3 फेज के लिए, दैट्स फाइन,
ठीक है, यही है, हाँ जी। अब एक्साइटेशन फेल मतलब ये पावर जीरो, इसी को क्या बोलते हैं, दैट इज रिलक्टेंस पावर, द पावर ड्यू टू सैलियंसी, ठीक बात है, हाँ जी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब साइन 2 डेल्टा 1 हो जाए, यानी कि डेल्टा कितना 45 डिग्री। दिस पार्ट, फोकस ऑन दिस पार्ट, तो बस हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर पी मैक्स पूछता ना, मान लो एज्यूम इट, तो जस्ट ये डेल्टा का फंक्शन होता, dp बाई डी डेल्टा जीरो करके वहां से डेल्टा निकालोगे। अगर ओवरऑल पूछता, इफ EF इज ऑल्सो देयर इनटू द पिक्चर, देन dp बाई डी डेल्टा इज इक्वल टू जीरो करते, यहां EF इज नॉट इनटू द पिक्चर, बस इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, डेल्टा 45 होगा, दिख रहा है यहां से, ठीक है। चलो जी, तो कितना हो जाएगा, व्हाट इज P मैक्स विदाउट एक्साइटेशन, इट कैन डिलीवर 3 इंटू 3.8105 का स्क्वायर इंटू 1/x³ माइनस 1/xt, ठीक है, कितना आ गया 1.361 मेगावाट, ठीक है, क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जरा समझना, ये तो हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, यानी कि दिस टाइम व्हेन एक्साइटेशन इज नॉट देयर बट स्टिल इट कैन जनरेट दिस मच पावर। लेकिन पावर कहां से, कैसे जनरेट किया, फील्ड तो चाहिए, तो सर बस बार से तो कनेक्टेड है ना, हाँ, तो वो मैग्नेटिक एनर्जी इट विल ड्रॉ, यानी वही फील्ड लेकर के उसी के फील्ड से ये उसमें ईएमएफ इंड्यूस करेगा, जो फील्ड आर्मेचर का फील्ड जो फ्लो हो रहा होगा ना रोटर के थ्रू, हाँ जी, दैट इज गोइंग टू डेवलप द रिलक्टेंस पावर, और उसी फील्ड से वो उसमें पावर इंड्यूस कर रहा है। मतलब दैट इन दिस कंडीशन द मशीन इज ड्रॉइंग मैग्नेटिक एनर्जी, ड्रॉइंग लैगिंग VAR, मतलब अल्टरनेटर ड्रॉइंग लैगिंग VAR, मतलब डिलीवरिंग लीडिंग VAR, मतलब विच पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक बात है। तो अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पूछ ले आपसे कि नाउ टेल मी व्हेन द एक्साइटेशन फेल्स देन व्हाट इज द पावर फैक्टर, वर्किंग पावर फैक्टर ऑफ द मशीन, तो कौन सा हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर। कोई भी मशीन जब लैगिंग VAR ले रहा है, अगर वो जनरेटर है तो इसका मतलब लीडिंग दे रहा है, और जनरेटर जो दे रहा होता है उससे पावर फैक्टर हम याद रखते हैं, राइट। जैसे कि इंडक्शन जनरेटर भी क्या करता है, लैगिंग VAR लेता है, लेकिन वो जनरेटर है तो लीडिंग VAR दे रहा होगा, यानी लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा, ठीक है। चलो टाइम भी हो गया है, आप इसको लिख लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स ए लॉट, ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से करना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई टेंशन मत लेना। पहले ग्रेजुअली कोशिश करना कि 30-40 मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाएं, पूरा पेपर एक बार जरूर पहले आराम से पहुंच लेना, और फिर जो जो क्वेश्चन बाद में करने हैं उनको मार्क करते चलना, और फिर जब 30-40 मार्क्स के हो जाएंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर रिमेनिंग टाइम में जो क्वेश्चन बचे हैं उस पर फोकस करके और उसमें ऐड करना जितना हो सके, ठीक है, इससे थोड़ा अटेम्प्ट अच्छा होता है, राइट। चलो, और जो इजी क्वेश्चन बाद में है वो छूटते भी नहीं। चलो, थैंक यू अगेन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।